Oh, surely one day he shall come to our cry. One day he shall create our life anew and utter the magic formula of peace and bring perfection into the scheme of things. One day he shall descend to life and earth, leaving the secrecy of the eternal doors into a world that cries to him for help, and bring the truth that sets the spirit free. The joy that is the baptism of the soul, the strength that is the outstretched arm of love. One day he shall lift his beauty's dreadful veil, impose delight on the world's beating heart, and bear his secret body of light and bliss. But now we strain to reach an unknown goal. There is no end of seeking and of birth. There is no end of dying and return. The life that wins its aim asks greater aims. The life that fails and dies must live again. Till it has found itself, it cannot cease. All must be done for which life and death were made. But who shall say that even then is rest, or there repose and action are the same? In the deep breast of God's supreme delight, in a high state where ignorance is no more, each movement is a wave of peace and bliss. Repose God's motionless creative force, action a ripple in the infinite, and birth a gesture of eternity. A sun of transfiguration still can shine, and night can bear its core of mystic light. The self-cancelling, self-afflicting paradox into a self-luminous mystery might change. The imbroglio into a joyful miracle. Then God could be visible here. Here take a shape. Disclosed would be the Spirit's identity. Life would reveal her true immortal face. राजेश्वरी कृपालये सुरपूजे मधुनन्दिनी अस्मज्जीवनधारिणी अस्मद्वाञ्छितदायिनी राजेश्वरी कृपालये मातस्तव सन्ततय क्रन्दन्ति तव
सम्मुखे प्रार्थनायात्र विलपन्त अश्रुमये धरातले मातस्तव सन्ततय क्रन्दन्ति तव सम्मुखे प्रार्थनायात्र विलपन्त अश्रुमये धरातले राजेश्वरी कृपालये मातरुस्मत्तस्य हायिनी कुरु करुणामयी मातरस्मत्सहायिनी कुरु करुणामयी छिन्नाननो सत्यपथे नय विमले जगदीश्वरी विमले जगदीश्वरी राजेश्वरी कृपालये अस्मान् भगवती पावनी कुरुते प्रेम भाजनान् सत्यस्योपलब्धये कुरु योगान् शुभकारिणे सत्यस्योपलब्धये कुरु योगान् शुभकारिणे राजेश्वरी कृपालये सुरपूजे मधुनन्दिने अस्मज्जीवनधारिणे अस्मद्वाञ्छितदायिने राजेश्वरी कृपालये राजेश्वरी कृपालये राजेश्वरी कृपालये राजेश्वरी कृपालये Respected Dr. Alok Pandey, Sri Narad, Dr. David Frolle, Amit Meherji, Professor Vishwanath Rai, and all the children of Sweet Mother. All Orissa Sri Aurobindo Study Circle Committee, Matrubhavan Kattak, welcomes you to participate in the 51st All Orissa Sri Aurobindo Study Circle Conference. It is happening in Sri Aurobindo's 150th year of birth. Hence, a special event among all the numerous events occurring this year in Odisha, India and the world. Due to COVID restrictions, we had to hold the 4-day-long events of these functions online. Sri Aurobindo is the first leader of this nation who came forward with the program of Complete Swaraj for India. He is envisaged and worked for a better tomorrow, not only for India but for the whole world. He is in the Divine Mother's term a direct intervention from the Supreme to deliver the creation from ignorance and falsehood. In Odisha, by the Mother's grace, we are fortunate to have received a special grace that has brought about a massive opening in the new consciousness that has been propagated through thousands of Sri Aurobindo study circles, 600 Sri Aurobindo integral education centers and many centers of collective living with the sacred relics sirens. We aspire for the glorious dawn when the Mother will accept the yearning of all our hearts
which has indeed made her Orissa. On behalf of Matruvan Trust, my sincere thanks and gratitude to all the children of the mother, my brothers and sisters for participating in this unique virtual conference. Thank you. निखिल उत्कल श्री अरविंद पाठचक्र सम्मेलन को समस्त शुभेच्छु भाग्यवान भातृवर्ग मान को स्वागत करुच्ची। गोटे समय एमती परिस्थिति आसे, एमती एक समय आसे पृथ्वी इतिहास जितेबाला हजार हजार वर्ष धरी प्रचलित थिबा धारणा पंथा नियम सब परिवर्तन हो जाए। जिते बर्तन प्राय से अवस्था जितेबाला अंधकार निजको दृढ़ भाव स्थापित करे, अंधकार जंत्र तार प्रतिभू शक्ति माने भावती जे आउ किछि करिवार नहीं, आमर विजय सुनिश्चित सब विजय हेब। कारण जो कम से हाथ दियंती से कार्य सफल हुए विरुद्ध शक्ति मानकर। किंतु सेई मुहूर्त किसी एक घटना घटे, किसी एक शक्ति आसे, किसी एक रूपग्रहण हुए जहाँ समस्त अंधकार को दूर कर दिए। रावण जितेबाला निजको संपूर्ण अजय मन करते श्री रामचंद्र का आविर्भाव है, रावणर सकल स्वप्न धूलिसात होगला। हिटलर जितेबाला भावुले जे आ किछि करहबनी, से ही समग्र पृथ्वी को जय करेंगे, कुआड चलीगले उड़ीगले धरिकी। ठीक से ही भाव में गोटे समय आसी जो समय जुग जुग व्यापिकी उपस्थित थिबा शासन करथिबा अंधकार अज्ञान शक्तिचय जितेबाला भावुचंती जे से आउ किछि करि हबो नाही, सेमाने ही सर्वापेक्षा सर्वश्रेष्ठ शासक। से समय श्रीमान श्रीबृंद का आविर्भाव होइछि। तांकर गोटे मात्र स्लोगान होइछि समग्र पृथ्वी निश्चय रूपांतरित हो, निश्चय परिवर्तन हम। आपको या विरुद्ध किसी भी करहबनी, जहाँ श्रीबृंद कहते माँ कहते ता घटब ही घटब। किंतु श्रीरामचंद्र जमती मांकड़ भालू मान को लेकरी रावण विरुद्ध जय करते, युद्ध यात्रा करते, युद्ध घोषणा करते, माँ सेमती आमको एक सुजोग देती अज्ञान विरुद्ध अंधकार विरुद्ध युद्ध यात्रा करने, स्लोगान देवाई, ठिया होवाई। आमे जानिचु भल करी आमे जहाँ द्वारा शासित होइतलु जुग जुग धरी तांक विरुद्ध कार्य करवा केड़े कष्ट, तथापि आम सांगे माँ रही। आमे जितेबाला कहू भिक्त्वा लाद स्मार बेली वंदे मातरम बेली, कौन ता माने कौन? भिक्त्वा लाद स्मार माने होची माँ भगवती विजय हो। माँ भगवती विजय अर्थ होची अज्ञानर पराजय, माँ भगवती विजय अर्थ होची मृत्युर पराजय। यही भाव में ही कार्यगुड़िक घटे आरंभ करमती मन हुए ये जो विशाल यात्रा, से यात्रा सत्य में भी जयतु सत्य में वो जयते आड़ को जाऊँ। सत्य ये अवस्था विजय हासिल करने सन्देहजनक अवस्था निश्चित जे विजय हम से आड़ को जाऊँ। से आमर कर्तव्य कौन? आमर कर्तव्य हूँ लक्ष्य संपर्क में सचेत हवा। आमर कर्तव्य हूँ एकाठी ठिया हवा, बी यूनाइटेड, एकाठी आम ठिया हवा, एकाठी माँ के सांगे ठिया हवा, एक संगे कहवा जे माँ विजय हो बोली। यही संपर्क में आमर समग्र सम्मेलन रे आलोचना हम। विभिन्न विषय रखा जाइए संपर्क में। भारतीय कला विषय श्रीमंद केते कथा कहते, विभिन्न अन्य विषय रही जो मैंने कहक आसुँच बहुत अभिज्ञ व्यक्ति, बहुत जानिबा व्यक्ति एवं सेमानकर मुहूर्त में शुणा अनेकर प्रत्यक्ष संपर्क रही माँ सांगे शिवंद सांगे से संपर्क आलोचना करेंगे। आम प्रमिश करवा जे माँ सांगे रही, आम प्रमिश करवा जहाँ कि आमको विभेद कर दिए ता विरुद्ध कहवाई ठिया हाँपाई आम देखू माँ को उपस्थिति आमको प्रत्याख्यान करनी छाड़िक जाए नहीं। माँ को उपस्थिति अति वास्तव रूपे आम सांगे रही एवं ए युद्ध रे आम पूर्वभाग रहीचु, माँ सांगे रही।
श्री अरविंद पाठक सम्मेलन आम ऑनलाइन माध्यम आज आरंभ करुचु 4 5 6 7 4 दिन धरी चलो एवं से उद्देश्य प्रस्तुत स्मरणिका बर्तमान माँ को रूम रे आम उन्मोचन कलु। वास्तविक गोटे रेयर ओकेजन गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण समय जो समय कि बहुत दिन धरी आम अपेक्षा करथिले समय को प्रभुंकर 150तम जन्म वार्षिकी पालन होची एवं 51तम निखिल उत्कल श्री अरविंद पाठक सम्मेलन ता सहित भारतर स्वाधीनता 75 वर्ष वार्षिकी पालन होची। ए तीनोटी जाकर गभीर तात्पर्य अच्छे। एका दिन रे एका समय रे जो कार्यक्रम करा जाउची ए सबू बेस किसी तात्पर्य बहन करे। आमे प्रभुंकर 100 वर्ष जो पूरा शतवार्षिकी पालन करूँ 1972 मसीहा अगस्ट मसरे से समय माँ से समय को केते गुरुत्वपूर्ण बोली वर्णना करथिले एवं ताहा माँ को सशरीर थिला समय पालित होइथिला एवं आमे समस्ते तार एक अनुभव नहींचु से समय जिते आम थिलु जो मान थिले हेतबेले तार अनुभव नहींचु जे माँ केते गुरुत्व देथिले एवं श्री अरविंदर विशेषकर श्री अरविंदर जो बाणी भारतर स्वाधीनता पर श्री अरविंद देथिले से बाणी संपर्क में माँ कहते जे प्रत्येक व्यक्ति पाखे बाणी पहुँचा दरकार। ओडिशा रे आमे गत अगस्ट 15 2021 मसीह श्री अरविंदर 150तम जन्मवार्षिकी पालन कार्यक्रम आरंभ कर सारी ता भितर सबुठारु बेसी गुरुत्व दिया जाउची एई माँ को जो इच्छा थिला निर्देश थिला जे सबु व्यक्ति पाखे बाणी जेपरी पहुँचो ता केतकांश हुए तो से पालन होता कि आम चेष्टा कर बर्तमान जदूर संभव जिते अधिक व्यक्ति पाखे से बाणी पहुँचो से उद्यम करुँ। आज जो स्मरणिकाटी आम प्रकाश करूँ यह से 150तम जन्मवार्षिकी गुरुत्व बहन कर प्रकाश करा जायछि। अधिकांश लेखा जहाँ श्री अरविंदर पुरातन लेखा सब हुए तो इंग्राजी किंबा तार ओडिया अनुवाद प्रकाश करा जायछि। बहुत दुर्मूल्य पत्रिका गोटे हम ये स्मरणिकाटी जिते अधिक व्यक्ति चाहिए आपको संग्रह कर पारे बहुत भल हो। जदिओ आम ऑनलाइन रे कार्यक्रम करूँ 4 दिन धरी करूँ 4 5 6 7 तथापि स्मरणिका जमती ओडिशा जाक पहुँची पार से आम चेष्टा करूँ। विशेषतः आसंता जुलाई मासरे जो गस्त हम जुलाई गस्त 30 जिला को से समय आम समस्त पाखे पहुँचे देवार व्यवस्था करूँ। एथे बहुत किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य सहित बहुत रेयर फोटोग्राफ्स माँ श्री अरविंदर माँ को विशेषकर ओडिशार काम संपर्क में जिते चिठी सब माँ पाक दिखाई है प्रपति महाशय और बाबाजी महाराज दौले और माँ से चिठी पर निजर कमेंट्स दौले से सब प्रकाश पाई। परवर्ती पीढ़ी जो पिला माने काम कर माँ श्री अरविंदर आसिकी सांगठनिक कार्य संपृक्त होती से समस्त यू गोटे आई ओपनिंग भाया हम से समस्ते बुझे सतरे माँ केते इनवल्व थे ओडिशार काम प्रत्येकटी कार्यपाई प्रपति महाशय माँ को लिखती और माँ तापर तांकर आशीर्वाद दियंती किसी मतामत भी केतले देइचंती। ए सबू को आम गोटे दुर्मूल्य वस्तु भाया संचय कर रखीचु आम पाखे एवं ताकू प्रकाश कले अन्य माने जानी पारिबे। बहुत दिन तले पंडिचेरी बाबाजी महाराज को शतवार्षिकी पालन समय आम तो गोटे मदर्स वर्क इन ओडिशा प्रदर्शन रे प्रकाश करथिलु एवं ताकू पुणी थे स्मरणिकार एथर प्रथम कर प्रकाश पाउची जहाँकि समस्त पाखे आभेलेबल हम जेन चाहिए पाखे रखिपारे। बहुत जहाँ कहती रेयर खूब दुर्मूल्य ये वस्तु पाइबा सहज नुह। तेणु मु अनुरोध करी आप जो मैंने शुणुंट या
जदूर संभव चेष्टा करेंगे स्मरणिकार गोटे संग्रह करने प्रयोजन हेल्ले आम जी छापीथु प्रयोजन हेल्ले आउ थे भी रिप्रिंट करूँ कारण 150तम जन्मवार्षिकी अनेक तथ्य चेष्टा करवाई आ सागर यह आउ थे आप स्मरण कर दूची जे आम श्री अरविंदर जीवनी एवं विभिन्न प्रसंग को नहीं गोटे प्रदर्शनी सेट बोली करदे बोली कही सेटा प्रस्तुत हो गला 140टा प्लेट प्रस्तुत हो तार मूल्य हूँ 7,000 टंका गोटे प्लेट को 50 टंका लैमिनेटेड ही रखाई से सबू जिला चाहूले आम गोटे नौ बोली बर्तमान जो मान दरकार जी अच्छी नहीं जा पारते जो मानकर अग्रिम ऑर्डर देवे अग्रिम ऑर्डर देले आम प्रस्तुत कर पठाई व्यवस्था करूँ से गोटे रेयर आपन पाखे रहा जिनस हम दुष्प्राप्य पर खोजिले हुए तो मिलनी यही सुजोगटा समस्ते पाइबा अनुरोध करुच्ची पुनर्बार समस्त को धन्यवाद दूँ कृतज्ञता जनाऊँ जे यही कार्यक्रम में आप समस्ते अंशग्रहण कर धन्यवाद नमस्कार। Namaste, dear friends. I am making this recording at the specific request of the people of Orissa, whom I love very dearly, because they are people of bhakti, and this is my way in life. So, I welcome you all, and I will share some experiences today that I have rarely shared with anyone because they are so personal, and they are about Mother and Sri Aurobindo. When I first met Mother, it was exactly 60 years ago, on November 24th, 1961. Darshan Day. Almost immediately after that, Mother called me to meet her, and I was so blessed to be able to spend almost 1 hour in her presence. In those days, Mother was still on the second floor. They had not built the third floor. Well, they had built it, but she was not there. She went after 1962. I entered the room, and only Mother was there. I understand, and in my own experience, in future meetings with Mother, Champaklal was always there, or someone else, mostly Champaklal. But this time, for a young man who had just turned 23, it was an extraordinary moment in my life. I saw the Divine Mother sitting there in her high-backed chair, and she welcomed me in with a wonderful, wonderful greeting in French. And I knelt down at her feet, and she began to talk to me about music. I don't remember the exact sequence of things because so much is behind the veil, so much that goes into the psychic being and is not remembered by this rather faulty mind. So Mother spoke to me about music and told me about some of the great composers of the West,
not Indian music, Western music, music that Mother grew up in and with. So Mother then asked me, is the music in you now? And I said, Mother, it is always with me. And Mother smiled and said, not always. And she took it away for a while so she could work on other aspects of my being. I can tell you the next thing that she said was a great surprise to me. In a very, very powerful voice, she said, you must bring down a new music. I said to Mother, Mother, I don't know anything about combining words with music. And Mother said again in powerful voice, no, no, you must go far above words and bring down the pure music. Well, for 60 years, I have been doing that. First, beginning with small groups, we had an ashram choir. And in that ashram choir, we wanted to sing to Mother on Christmas Eve. It was an extraordinary thing that we asked to do. And Mother did not reply. So my friend, her name was Marilyn Widman. She was a disciple who passed away here in the ashram. She said, you must write Mother again. I wrote Mother again and said, Mother, we would like to sing to you under your balcony on Christmas Eve. No answer. So I said, all right, I think it's not meant to be. And then Marilyn said, in a very pushy way, you write to Mother one more time. You know, I didn't feel that this was a good thing to do, but since Marilyn said it, I did write to Mother. And Mother writes back, I would like you to sing by the Samadhi. Oh my gosh. Manoj Das Gupta, Arup, Lilu, so many of the older ashramites joined me, Tublu, Richard Pearson. Oh, there were so many of them. And what I didn't know was that this would be a darshan. And Mother came down into her salon and then opened that small window looking out onto the Samadhi. The choir gathered, but there was almost no room because the word had spread that this would be a darshan of the Mother, a special darshan. And they just allowed us room to walk in there, and the choir stood by the Samadhi looking up at Mother. And I was looking towards the Samadhi. I gave the tones for the first song. The wind was blowing, and it was the worst performance my friend Dimitri von Mohrenschildt said he had ever heard. It was pure cacophony. Well, the singers couldn't hear each other because the wind was blowing. What to do? So I turned around and I looked up at Mother and I said, Mother, we are singing for you. Can you believe? The rest of the concert,
Not one wrong note. It was perfect. Well, back to my interview with Mother, my first meeting with her. She says to me, "Would you like to talk or would you like to meditate?" Knowing nothing at that time, just having turned 23 years of age, I said, "Meditate, Mother." And so I stayed at her feet and closed my eyes. And the most extraordinary thing happened. I saw and I felt a fire in my solar plexus. And that fire continued to grow and grow and grow. And it grew into my heart, and it grew into my neck and into my head, and above my head, huge flames, but no burning, only heat. And it went on and on. I don't know how long, 15, 20 minutes perhaps. And at the end, my whole being, I just started to weep, and I wept and I wept and I wept on her feet. And that was my initiation. I've had many, many meetings with Mother that are so precious to this soul. One time I came with Shamsundar, another time with Richard, another time alone. But the meeting with Shamsundar, I think, was, for me, one of the great experiences of my life. Because I'm showing Mother these different flowers, and I showed her the flower that the sticks of that blossom are used in the I Ching. And Mother was very, very interested. And I showed her another flower, and she was wondering, do we have this name for this flower? And I didn't feel that she was totally convinced that this was the name, so I didn't say any more. I showed her another flower. And then things become very, very quiet. And what happened next was something that shall live in my soul forever. Shamsundar said to me, "Narad, put your head in Mother's lap." And I did so. And Mother put her hand on my head. I will never forget that moment. I had always touched Mother's feet with my hands, with my head. Somehow I had never thought to put my head in her lap. Oh, it was such a moment. Four years later, I'm back in America, in my father's home. I'm working with him, and one night I fall asleep. And in this dream experience, and I'm going to tell you another one also, Mother said they were both very true experiences. And Pavitra wrote to me and said that he held off showing my letter to Mother for a little bit
until she had time to read the entire letter. So, my dear friends of Orissa, this was my first experience with Sri Aurobindo. Live, I would say, because it is more real than me looking at you right now. He was seated on his couch, and he motioned for me to sit next to him. Can you imagine a young boy of 23? So I sit down next to him. And he says something to me like, "What a fortunate fellow you are to be able to realize all your ambitions." Maybe he said desires, I don't remember which, but I understood it was all of my aspirations for this yoga. And then he takes his hand and he puts it on my solar plexus and on my chest. And I remember that between his fingers, the strands of his hair touched my chest also. And it was, I couldn't do anything but weep. There was such compassion in his voice, such gentleness in his touch. Well, I don't know how long it lasted, but it just as Mother changed my life, so did he. This incomparable blessing of the Lord, the divine in human form, the avatar. Well, this story is not over, because the next night, I believe, or the night after, I believe it was the next night, he came again. And this time, I'm very aware of his home in the subtle physical. It was a beautiful place. It is a beautiful place, and it's his permanent home. And I'm looking at these floors that seem to be shining with gems and light coming from them. And I'm looking at these huge alabaster columns, so beautiful. And Sri Aurobindo is walking with two people. And one of them was Nolini, and the other one was Purani. But Purani already had left his body. But there, Sri Aurobindo is talking with both of them. And they're walking very slowly. Sri Aurobindo is in the middle of the two of them. And he's walking towards me. And as he gets up to me, he says, "What kind of a look is that? Smiling, gracious, beautiful Sri Aurobindo." I was very, very angry. I was an angry young man, and I had a lot of anger built up in me. And so I said to him, "Did you or did you not come to me last night?" And Sri Aurobindo smiled. And then he said, very sweetly, "I did." Now, when I sent this letter to Mother, it was a long letter because I can't remember the whole thing, but I had written it all out.
Mother said the experience was very genuine. But she said, don't make a mental thing of it because it could lose all of its force. So, that was my first and second meetings with Sri Aurobindo. Next, one day I'm visiting with Amal Kiran, whom I used to visit very often in the nursing home. And when I wasn't in Pandey, I would send everything they needed for him. Vitamins every day. And he would refuse to take them. Said they are too bitter. And the girls would say to him, but they have been sent to you by Narad. And then, okay, I'll take them. And he would take them. And once, I remember very clearly, he got bed sores, and they were very serious, because he was lying in the bed 24 hours a day. Very rarely he would get up, and with great difficulty they would lift him up. And they said to me, what can be done about this? So I began to study the whole thing about bed sores and how they could be cured. And I was able to send him a silver oxide ointment, and in 3 days, all the bed sores were gone. So we used to talk a lot about poetry. I mean, that was his specialty. And he corresponded with Sri Aurobindo for years on Savitri, asking Sri Aurobindo so many questions and suggesting things which Sri Aurobindo almost never accepted and explained why he didn't accept them. Well, anyway, the problem I faced was poetry was starting to come down into me. And I found that maybe sometimes I didn't receive or even hear properly, because what I was experiencing was that the lines were coming down so quickly that I had to write very, very rapidly. Now, sometimes maybe I missed a word or something. And I said to Amal, Amal, if you feel a line of poetry is not correct, and Sri Aurobindo says that you should not use your mind to try and improve that line, then what should you do? Amal became very quiet and he said, appeal. Wow, appeal. And then he again said something that has remained with me all these years. If you are patient, there will always be an answer. Imagine that. If you are patient, the Lord will always respond to you. Now, of course, it can't be a silly thing like my son needs to get better grades, or I want to get my child married or something. No, it has to be something of great depth. But the Lord will always respond to you. Perhaps it's a health issue. Perhaps it's something that you have to clear out in your being. There will always be an answer. So I thanked him, and I began walking down the stairs. And I tell you, I'm on the lower stairs in the nursing home, and Sri Aurobindo speaks to me. And he says to me, go deeper.
Go deeper. He said it twice. And that's all. And now poetry flows so rapidly that just before I came here for my talk with all of you, I wrote 3 poems. How can I use the word I? I cannot say that. 3 poems came down, and I wrote them as fast as they came down. Now, I will take credit for one thing, my mistakes, in either not hearing the word or not transcribing it possibly. But these are supreme gifts of the avatar, Sri Aurobindo. And all my life, I will be grateful to him and all that he has done for me. Now, I want to tell you of the last experience with Sri Aurobindo. I had many, many experiences with Mother, but I'll tell you a few of them afterwards if I can recall them sufficiently well enough. So here Sri Aurobindo is back. No, he's always in his subtle physical realm. And he's seated in his chair. And he motions me to come forward. And it was so beautiful. I look at him, my whole soul is given to him. And I get very close to him. It's difficult for me to say this without tears flowing down. He lets me massage his feet. Some time later, I asked my Upaguru, Aurobindo Basu, what does this mean? He said very simply, it means you have surrendered to him. But now you have to make the surrender more complete. And that's my work. I'm going to fast forward ahead and tell you about my birthday. On July 29th, 1972, just about 16 months or so before Mother left her body. She could not see me that day on my birthday because that was her day with Satprem. So she asked me to come on the 28th of July. You know, we had been reading notes on the way that were published in the bulletin 4 times a year. And we knew that Mother was working on the transformation of the physical body. And she had told us that she had already transformed many of the cells in her body. And she said that those transformed cells would go to anyone in the world who was open. So naturally, we didn't want to take much time with Mother. I felt, let me go in and take my birthday card, thank Mother, and leave. So I went in. And I must say that this experience that I had on walking into Mother's room was really extraordinary. And another friend of mine, Bob Zwicker, whom many of you may know, he's in the archives, has always had the same experience.
When I explained it to him, he said, yes, that is my experience. And what is that experience? When we walked into Mother's room, there were no walls. It was vast. It was almost infinity. And it took a long time to reach Mother's feet. Now, when I go there in recent years, I realize in 2 steps you're at Mother's chair. But then it was a different experience. So I go before Mother. Immediately I bow down. And Mother gives me a wonderful birthday wish and hands me my card. Mother always sent me beautiful cards. Even when I lived in America, she would have her secretary send me a card every birthday. Now remember this. This is from 1961 to 1973. Always I received a card. Sometimes with a beautiful saying, usually from Sri Aurobindo. So I took my card from Mother and touched her feet and started to get up. And Mother says, look at your card. I never heard this before. So I have to open the envelope and I take out the card. And there she has written on the top my old name and then underneath my new name, Narad. Well, I couldn't stop crying. I must have cried at her feet for 10 minutes, taking all her time. And then I left. Now, I'm going to go back because another thing just came into my consciousness. And that is the beautiful experiences I had in what was called then the soup room, where Mother would have a cauldron of soup. She would take a spoonful, she would taste that spoonful, and then give it to a disciple. She would do this over and over again. In those days, that room was open, and there was a sepia photo of Sri Aurobindo. And I would always go there before even I went to the Samadhi. I asked Aurobindo Basu, why do I do that? And he said, because Sri Aurobindo has installed his presence there. So I would go in, offer myself, bow down, touch my hands and my head to the floor. And he gave me my first poem, only 4 lines, and I shall share it with you. These are the currents of my life. Engulf them in thy sea. The tangled threads of daily strife reweave to image thee. And that is how poetry began, through me and in me. Another time, I went into that room because there was such a peace there. And that peace was equal to the peace at the Samadhi. But it was a small room, and Mother had been there giving the soup ceremony. Now it's been closed for years, and they don't allow anyone in. Which is... Anyway. I walk into the room and I prostrate myself completely. And here is an example of Sri Aurobindo's humor.
he says to me, and it's good for the circulation too. When my wife, Annie, and I were traveling one day down the Taconic Highway in New York State, it was a blizzard, and the road was like glass. And two ladies had parked perpendicular to the direction of traffic. Brakes wouldn't work, of course, and I couldn't get around them. The car had taken up the entire road, and I smashed into their car. They weren't hurt, but Annie went through the windshield, and her face was filled with deep cuts. We were rushed to the hospital, and they began to stitch up Annie's face. I remember Kailash Javeri was with us in the hospital, and she stood at the foot of Annie's bed, and she saw Mother, and she says, "Mother is with you." Well, that night, I had an experience. That experience was go out and get vitamin E capsules, break them open and put the oil on all the scars. We wrote to Mother, and Mother said, "There will be no scars." Imagine that. And there were no scars. When she was completely healed, there were no scars. We recovered $3,000 for medical expenses. Today it would be $3 million. And I wrote to Mother, and I said, "Mother, you have saved our lives. May I send the $3,000 to you?" Mother wrote back, and she said, "Why don't you use the money to come to the inauguration of Auroville?" Wow. February 28th, 1968. So I bought the tickets, and each ticket was $1,500. Total, $3,000. So we arrive in the ashram, and Mother calls us almost immediately. We had come, and there was a young man with us who was from California. And Mother looked at that young man. I remember his name was Isidore, and she gave him this most beautiful smile. And in 2 weeks he was gone. This was not for him. Then she looks at Annie, and she says, "This is not the first time we have met. You have been with me many times, many, many times." This was such a thing to hear from the Divine Mother. And Annie remembered that she had been in Egypt with Mother. Now, Mother turns to me, and sort of surprisingly, she says to me, "You don't want to come to Auroville in a few years? I feel you can do something there."
I said, "Mother, whatever is your will." Well, we went back to America. And I'm going to tell you a very interesting story. I was working in a restaurant. I became the manager of that restaurant. And then one day a gentleman comes to me and he says, "My name is Fred Weintraub, and I have a restaurant on Bleecker Street in Lower Manhattan, and it's failing. If you will come, I will give you 50% of the restaurant, if you can bring it back to health." Well, how could I refuse that wonderful offer? So I went. Now, in those days, this was the area that most of the hippies came to. It was the area of creative music, of great bands. And I remember these bands. I remember seeing Woody Allen practicing in the bitter end, which was just below the restaurant, which was called the Tin Angel. And I remember Neil Diamond practicing and Fred telling him, "You have to do this, you have to do that." I remember Woody Allen giving his monologues there. There were famous people all around. And I made the restaurant a French restaurant. And in those days, everything on Bleecker Street was hot dogs and hamburgers, and there was no restaurant with great meals. And we became very famous. Andy Warhol, the artist, would come with his group of people, 6 or 7 people, and they would come regularly because they loved good food. And we would never pay attention to them because they didn't want to be paid attention to. They had plenty of that. We would serve them, be there for anything they needed, and they would come back again and again. People came to review the restaurant, and it was a time when I was making more money than I had ever made in my life. In addition to my salary and a percentage of the restaurant, I was making more than $300 a night. And then one night, a voice begins to speak to me. And it says very simply, "Go to California and help Jyoti Priya with her center." Wow. Jyoti Priya was a Sanskrit scholar. And at the age of 19, she left her parents, who were theosophists, and went to Benares to meet the great swamis and sages there and ask them, what was the secret of the Vedas? And they all told her, these are just stories told by people to their children. They don't really have any meaning at all. And she was very saddened by all of this. The night before she leaves, a man comes to her and gives her the typewritten copy of The Secret of the Vedas by Sri Aurobindo. That man's name was Aurobindo Basu. Jyoti Priya's legal name was Dr. Judith Tyberg. But when she read this all night long, she said,
I have found my Guru. And she went immediately to the ashram in Pondicherry. And there she met Sri Aurobindo. He gave her the name Jyoti Priya. Well, the next night, this voice is speaking to me again. Go to California and help Jyoti Priya with her center. And it goes on for a week and the voice doesn't stop. So I write to Mother. No answer. Now, 3 more weeks go by. 1 month I'm hearing this voice. I write to Mother again. No answer. And then after a week I write to her again because this voice doesn't stop. And Mother sends back a telegram. My answer to you was so positive that I thought I had written it. And so I gave up all this money, all this position, and left with my wife for California. We found a small apartment to live in, and we had almost no money. So I got a job in landscaping. Well, yes, I have to switch back and I have to tell you that Mother had told me in a few years. And so I wrote to Mother again, and Udar answered me. My question was, what does Mother want me to do? Does she want me to study in college or do practical work? Udar writes back and says, Mother says both. So I had to work almost 18 hours a day. And, that 18 hours a day was another time when I just had come back from the ashram in 1962. This time I got a job at a nursery. Well, it was called the Garden Center. And it was in Hollywood. And all the actresses and actors would come to this garden center because the people there were very knowledgeable. And I would hear from Vincent Price and Gregory Peck and all these famous people. And I loved the work there. Oh, it was such a marvelous place. And at the time, that place, just for the land, was worth $50 million. Wow. And one day, the owner calls me into his office and he says, I have no children, and I always considered you my son. I'm getting older and I would like to retire and give you this garden center. Oh my gosh. 50 million. When it sold, I think it sold for over $100 million. And he wants me to have it. The next day, I get a letter from Mother. And she just simply says, "A bientôt. See you soon." Well, it wasn't 9 years after all. It was only a few months. Somehow within me there was no question at all. I gave it all up and prepared to sell the little
possessions we had and come to Mother. Now, people have heard this, but you may hear something with your ears, but not be able to realize it for various reasons. So Mother calls me one day to talk about the gardens, and she says to me, I have chosen all the flowers. In other words, she chose a flower to be the representative of each garden. Then she says to me these words that I will remember in many lives to come. Quote, about the gardens, quote, it must be a thing of great beauty, of such a beauty that when men enter, they will say, ah, this is it. And they will experience physically and concretely the significance of each garden. In the garden of youth, they will know youth. In the garden of bliss, they will know bliss, and so forth. Then Mother raises her hand and she begins to create a spiral going upward. And she looks at me and she says, one must know how to move from consciousness to consciousness. And then our interview is over. And another day she calls me and she says, I would like you to begin with the Garden of Unity. And the Garden of Unity is still not completed today because there is no true collective harmony. The most important thing for Aurobindo to finally develop is collective harmony. And Mother writes in the Flower Book, which I'm going to talk to you about next, it is possible only for the divine. And we must unite with the divine to find this true collective harmony. In 1968, I brought 4 huge volumes from the Royal Horticultural Society, their Dictionary of Gardening. And I began to work with my wife, at that time, Mary Helen, another lady, Mary Aldrich, and Richard Pearson, who is still doing very well in the ashram at care. And what I wanted to do, since nothing was done for many years on the flowers, was create a book with all the flowers Mother had named, nearly 900 of them. And so we began to bring a flower, look at it, find it in the Dictionary of Gardening, and get its correct botanical name. Of course, we had Mother's significance. But then we wrote to Mother, and we asked her if she would give a commentary on each flower. And Mother agreed, but she said, I want to see all the flowers before I give the commentaries.
Of course, she knew the flowers from France. She knew the tulips and the daffodils and all the Western flowers. So we would bring her flowers regularly, many, many, and then she would give us comments. And I have those comments that Tara has kept, and I photographed all of them, or actually she photographed them all, I believe. And some of the papers were so delicate that they couldn't be moved. They had to be photographed with a phone. And I've kept those very, very safely. So this book, we asked Mother, will you give us a name? And Mother said, Flowers and Their Messages. Now, when Mother called me to come back, I arrived in December of 1969, and Mother put us up in Promesse. And I would go every day to Auroville, which was then a desert. There were no trees at all. And finally I found a little spot with about a dozen mango trees and some shade and a canyon at the backside, and it was the perfect place. And I wrote to Mother, and she gave her blessings. And another fellow who worked with me for many years, a wonderful Japanese-American man, Howard Iriyama. Now, Howard changed his name to Amrit. Now, that place was so welcoming, but it had no water. And we found a water source in a place called the pump house. And we would pump through a PVC pipe water all night and fill a small pool that I had built, and then water the plants during the day. Mother was with us at every moment. We had to face so many difficulties I can't even begin to tell you. Snakes of all kinds. When we walked to the pump house, there would be snakes crossing the path. And I don't mean non-poisonous snakes. I'm speaking of cobras and vipers, two kinds of vipers, Russell's viper, saw-scale vipers, and even kraits. So there was very little food, great difficulties, and a desert to eventually build a forest. And I would grow thousands of trees every year. Nurse trees, trees that I got from seeds that the conservators of forests, who were great friends, would take me up into the mountains of the Western Ghats, and they would collect seeds with me and help me so much. They were great people. They were devoted foresters, and I shall revere them forever. Boja Chetty, Hussein, Kondas, wonderful men. And they would come and they would write me letters on how beautiful the nursery was and all the plants that I had introduced there. And of course, Mother was with us at every moment. And it was Mother was in her physical body, of course. For the next 4 years, she was with us. So I began to grow very, very beautiful flowers. And I would send them regularly to Mother through Tara. And Tara was the contact for the flower names. And Mother would tell her those names, mostly in French. I didn't speak any French. And sometimes in English. And I would stand by the samadhi
and listen to Mother exclaiming about the beauty of these flowers. Magnificent, superb, she would say, and I would listen. Now, when I moved to the nursery, we built a small house there, I would send beautiful flowers to Mother. I think I sent at least 60, perhaps 80 flowers that Mother named from the nursery. And I'll tell you just a few of them because they're so beautiful. One is called Remembrance of Sri Aurobindo, and it has been close to my heart all these years. Another one was called Joy of Union with the Divine, and it is actually the Italian large leaf basil. And there were so many others, but what I did was, one day I filled a van filled with plants that I had collected the seeds of in California. And I had a great group of people who would go with me every week, and we would collect seeds for the Matrimandir. And I grew these plants, and I said, one day, let me go to the Lal Bagh, because I had heard about this wonderful garden in Bangalore, the Lal Bagh. And I filled a van with plants, and we drove this car to Lal Bagh, and I met the director of the gardens, Dr. Mari Gowda. And Dr. Gowda was so happy to receive them, and he wanted to give me a present in return. And what he gave me was about 12 or 15 very special hibiscus with large, large blooms. And they were from Hawaii. So I brought them back, and they began to bloom so beautifully that I would send one to Mother every day. And Mother named them for Auroville. So one of them would be Charm of Auroville. Another would be Realization of Auroville. Another would be another aspect of Auroville. And then one day, Mother said to Tara, we need to have a wider understanding of this flower for the world. So we'll call it also the New Creation. So Charm of Auroville also became Charm of the New Creation. Realization of Auroville, Realization of the New Creation, and so forth. And now, Mother didn't name any other flowers but one, and gave them two significances. And that one flower was a wild plant that grows all over this area of South India, and Mother named it Miracle. And she changed that miracle to Air of Auroville. And so we know that the air of Auroville is truly a miracle. Now, just the other day, I had an inspiration, actually an intuition, that we are going to do a program after I return from selling my house in America. I'll be away for the next 3 months, and maybe I can invite all of you then to view this program. It will be all about the flowers and their messages, and we will go into the
depths of the flower, to understand what it means, to understand how Mother has given it a very special significance that can go directly into your soul. So if you want faith, there's a flower of faith. If you want harmony, there's a flower of harmony. If you want love, there are flowers of love. If you want perfection, etc., etc. And we will take our time and we will go through all these flowers. I have 75,000 photographs of flowers that I can share with you, many of them in the finest quality, and I will be happy to do that. So that's an upcoming program, and I invite you all to continue watching our website, motherandSriAurobindo.in, and our two YouTube sites, one simply Richard Eggenberger, and the other one just Mother and Sri Aurobindo. It has truly been an honor for me to speak to you today, and perhaps in the future we'll be able to speak some more about this wonderful new creation that Sri Aurobindo and Mother have brought down, entitled The Supramental, and their promise that all of us who have turned to them, listened to their call, will one day realize the supramental and become transformed beings, beings who carry in themselves the supermind, in new bodies that are free from death, free from illness, free from all the challenges of life, and we will enjoy a divine life upon this blessed earth, which means so much to all of us. Namaste to everyone in Orissa. I send my love and my prayers to each of you. I ask the Divine Mother to bless you and to protect you and to guide you and to shed her grace and love upon you. And I ask Sri Aurobindo, in his great compassion, to be with you always. Namaste. The Eternal in a Human Face, Sri Aurobindo. श्री अरविंद शाश्वत का एक मानव रूप में, एक मानव चेहरे को लेकर के संसार में प्रकट होना, इसको अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो ये एक अवतार की लीला इसका संकेत है। श्रीमद् भागवत में दो छोटी सी कथाएं हैं, श्री कृष्ण लीला का हिस्सा हैं वो, और वो इसकी ओर बड़ा सुंदर संकेत करती है। एक कहानी तो वो है जहाँ माँ यशोदा एक दिन श्री कृष्ण का मुख खोलती हैं ये देखने के लिए कि उन्होंने मिट्टी खा ली है, और वो जब मुख खोलते हैं श्री कृष्ण तो वो देखती कि वो मिट्टी नहीं, सारा ब्रह्मांड जिस मिट्टी से बना है वो श्री कृष्ण के अंदर है। ये एक अलग दृष्टि है। बाहर की दृष्टि से अगर हम देखें तो श्री कृष्ण ब्रह्मांड के अंदर हैं, लेकिन यदि योग दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड श्री कृष्ण के अंदर है। बाहर की दृष्टि से हम देखते हैं तो देखते हैं कि नन्हे से कान्हा, उनका हाथ बंध गया है और ओखली से बांध दिया गया है, और उसके कृत्य को देखें तो वो जो बंधे हैं वो बंधन मुक्त करे जा रहे हैं, क्योंकि वो ओखली को लेके खींचते हुए दो वृक्षों के बीच में जाते हैं, और वो दोनों पेड़ जो वास्तव में एक देवता हैं
वो टूटते हैं और टूटने के साथ साथ वो मुक्त हो जाते हैं, उनके अंदर जो देवत्व छिपा है। तो कहानियाँ इस बात का संकेत है कि हमारी एक दृष्टि है जो सीमित को अलग और असीम को अलग, शांत, लिमिटेड, फाइनाइट और इनफाइनाइट को अलग करके देखती है। और इसके कारण बहुत भेद, बहुत सारी फिलॉसफीज आई इत्यादि, उसमें हम लोग ना जाएं क्योंकि वो फिलॉसफर्स को डिबेट डिस्कस करने दें। लेकिन एक दूसरी दृष्टि, तो अगर हम उस तरफ से देखें तो देखते हैं कि सारी सृष्टि वास्तव में इनफाइनाइट ने ही स्वयं को सीमित किया हुआ है। और जब कॉन्शियसली जो अनंत हैं, जो शाश्वत हैं, वो काल की गति में उतरते हैं, वो एक सीमित रूप धारण करते हैं सचेतन रूप से, तो उनको अवतार कहा जाता है। यानी एक दृष्टि से हम देखें तो सारी सृष्टि वास्तव में असीम ने स्वयं को सीमित किया है। हम सब उस दृष्टि में, माता जी कहती हैं कि एवरी साइकिक बीइंग इज इन दैट वे ए पोर्शन ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि साइकिक बीइंग का जो ओरिजिन है, जो सीड का ओरिजिन है, बाद में वो डेवलपमेंट के साथ साइकिक बीइंग बनता है, वो तो एक्चुअली सृष्टि के प्रारंभ के पहले है। तभी तो जब इनकॉन्शियंट में प्लंज हो जाता है क्रिएशन, तो साइकिक बीइंग, सारे जो साइकिक एसेंस हैं, सोल है, वो प्लंज करती है इसके अंदर। तो एक दृष्टि से हम देखें तो वो टाइम स्पेस के परे है, और उन सब ने, हम सब ने एक दृष्टि से सीमित रूप धारण किया है। हालांकि हम आते अनंत के क्षेत्र से हैं, लेकिन इसके साथ ही एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा जब भगवान, जिनके अंदर ये अनेकों अनेकों सेंटर्स प्रकट हुए, जिसको आज हम सोल और फिर सोल डेवलपमेंट के साथ चैत्य सत्ता बनती है उस नाम से जानते हैं, तो वो अनंत जिनके अंदर ये बहुत सारे सेंटर्स बने ओरिजिन में, ये सृष्टि के पहले की बात है कि हम सब वास्तव में उनके एक एक सेंटर, उन्होंने अपने ही अंदर अनेकों सेंटर प्रकट किए, और हर एक सेंटर के अंदर उनका कोई एस्पेक्ट प्रकट होना था। तो आप इस तरह से देखें कि वो महाशून्य लेकिन परम शून्य, नॉट ये वाला शून्य जिसमें कुछ नहीं है, परम शून्य जिसके अंदर सारी संभावनाएं हैं और पूर्ण सचेतन है। तो उन संभावनाओं को, उस अनंतता को अनेकों अनेकों रूप में, अनेकों अनेकों प्रकार के विस्तार में लाने के लिए उन्होंने अपने ही अंदर उनको एक बीज रूप में जन्म दिया, और वो सारे बीज फिर धरती पर आते हैं और फिर बीज की यात्रा प्रारंभ होती है। हम सब भगवान के एक बीज हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हैं, अनंत से जुड़े हैं, और सीमित होने का, बंधन होने का एक प्रकार से हम लोग खेल खेल रहे हैं, हमें पता नहीं है। श्री अरविंद का एक महावाक्य है मोक्ष के ऊपर, वो लिखते हैं कि ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि नन इज बाउंड, नन इज फ्री, नन इज सीकिंग टू बी फ्री। नन इज बाउंड क्यों? क्योंकि वास्तव में जब हम स्वेच्छा से कोई चीज को स्वीकार करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वी आर बाउंड, वी हैव चोजन टू बी बाउंड। नन इज फ्री इन द सेंस अल्टीमेटली जिसको हम फ्रीडम कहते हैं वो डिवाइन की फ्रीडम है, तो सच्ची फ्रीडम भगवान के साथ यूनियन से आती है। नन सीकिंग टू बी फ्री, हम आए फ्री होने के लिए नहीं है, हम एक विशेष कार्य करने के लिए धरती पर आए हैं, और ये हम सब इस कार्य में संलग्न हैं। एक काम है जो बाहर से हमको दिखाई देता है, भिन्न प्रकार के नौकरी चाकरी काम काज हम लोग करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक और काम है जो चल रहा है, और वो हमारा ओरिजिनल प्रयोजन है। और वो प्रयोजन है कि अंधकार के अंदर, निश्चेतना के अंधकार में, निश्चेतना को सचेतनता में बदलना, पीड़ा को आनंद में बदलना, अज्ञान को ज्ञान में बदलना, असत्य मिथ्या को सत्य के इक्विवेलेंट में बदलना, अशक्त को शक्ति में बदलना। तो ये हम लोगों का, मृत्यु को अमृतत्व में बदलना, इस काम के लिए हम सब आए हैं। ओरिजिनली हमारी ये अवस्था थी, लेकिन वो एक बीज रूप में थी। तो ये काम जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान का काम, भगवान का ही काम है, लेकिन मैनिफेस्टेशन है जो उनकी अभिव्यक्ति है, वो धीरे धीरे जब चलता जाता है तो जैसे जैसे आत्माएं विकसित होती हैं, सोल विकसित होती हैं, एक एक स्टेप इवोल्यूशन का जुड़ता जाता है। उसके विस्तार में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कभी कभी एक ऐसी भूमि पर चला जाता है या काल की एक ऐसी गति में चला जाता है जब उसका स्पंदन, काल का स्पंदन विनाश की ओर ले जा रहा होता है। इसको हम लोग इस तरह से देखें कि कोई म्यूजिशियन है और एक महा म्यूजिशियन है, उससे किसी ने सीखा है संगीत, और कई लोगों ने संगीत सीखा, आप सबको ये ऑर्केस्ट्रा बजाना है।
अब कुछ लोगों ने सीखा है, कुछ ने नहीं सीखा है। तो प्रत्येक ऑर्केस्ट्रा का एक मास्टर कंडक्टर होता है। तो अगर आपको ऑर्केस्ट्रा सही ढंग से बजाना है, हारमोनियसली बजाना है, 200-300 लोग हैं, अलग अलग म्यूज़िक अभी आया था व्हाट्सएप में वंदे मातरम का, और भी मैंने 300 लोगों का एक लाइव ऑर्केस्ट्रा देखा है। तो कैसे करते हैं, उनकी दृष्टि जाने अनजाने वो सीखा होता है, फिर भी वो कंडक्टर की ओर होती है। कंडक्टर की साइन लैंग्वेज होती है, वो कभी हाथ उठाता है, कभी कुछ ऐसे करता है, कभी कुछ अपने मुख से, लेकिन ये लोग ठीक समझ रहे हैं, इनके सामने भी वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, और उस हिसाब से जब बजाते हैं तो बहुत सुंदर होता है ऑर्केस्ट्रा। अब ये मल्टीपल ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कठिन है, लेकिन उसका सौंदर्य भी बहुत है। जब केवल 2 लोग करते हैं तो उसको जुगलबंदी कहते हैं। जब वो कई लोग एक साथ, तो भगवान चाहते हैं कि यहाँ एक ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा बनाया जाए। लेकिन अब इस ऑर्केस्ट्रा में और उसमें जो धरती पर होता है, उसमें फ़र्क ये है कि हमको अपने इंस्ट्रूमेंट को भी ट्यून करना है ताकि इसके अंदर म्यूज़िक बन सके। कोई भी ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं तो परफॉर्मेंस देखने वाले तो जब जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो जाता है, 1-2 घंटे इंस्ट्रूमेंट को ट्यूनिंग होती है। उसके बाद उनको ओरिजिनल स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए, और तीसरा उनकी दृष्टि कंडक्टर के ऊपर होनी चाहिए, मास्टर कंडक्टर यानी जो कंडक्ट कर रहा ऑर्केस्ट्रा, तब बड़ा अद्भुत म्यूजिक होगा। अब संसार की विसंगति का कारण यह है कि अधिकतर तो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्यून नहीं है। प्रकृति ने इंस्ट्रूमेंट हमको दे दिए, रॉ इंस्ट्रूमेंट। किसी के पास तबला है तो उसको पता नहीं कि तबले को कैसे बजाते हैं, ट्यून नहीं है। तो जब तबले पे धप करता है तो तबले की ठक ठक के बजाय उसके ऊपर राग निकलता है, धम धम, तो एक बेढंगा सा निकलता है। और प्रकृति एक लंबे समय तक हमको केवल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना सिखाती है। अब तक जो क्रिएशन में हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग हो रही है। फिर हमको पता नहीं है, हम ओरिजिनल जो नोट आया था वो खो गया, तेज हवा आई, इनकॉन्शियंट ले गया, उसको छिपा दिया, कहीं फट गया, कहीं वो उलझ गया। तो अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। फिर हम लोग मास्टर की ओर देखते हैं कि चलो आप कंडक्टर हो, मास्टर कंडक्टर, आपको देख के हमको गाइडेंस मिल जाए, पर उनकी गाइडेंस साइन लैंग्वेज है, तो हमें फिर समझ नहीं आता। साइन लैंग्वेज का मतलब कि जब जीवन में उथल पुथल हो रही है, सब टूट बिखर रहा है, तो हमको लगता है कि मास्टर हमसे क्रोधित है, नाराज है, लेकिन मास्टर की कृपा हो रही होती है, साइन लैंग्वेज है। और उस समय अगर आपके सामने नोट है तो आप देखोगे कि नोट में ऐसे टोन्स आ रहे हैं जिसके अंदर में एक जैसे महाप्रलय तांडव हो रहा हो। और उसी के बाद अगर आपके पास पूरी स्क्रिप्ट है तो आप देखते हो कि अरे इस तांडव के बाद लय लास्य का रस आना है। लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट पूरी नहीं है, और कई लोग जैसे करते हैं इधर उधर देख के, ड्रिल में होता है ना, वो सीखी नहीं होती है, तो वो इधर उधर को देख करके अपने हाथ पाँव को चला रहे होते हैं। तो संसार में इस कारण एक कलेक्टिव लेवल पर विसंगति होती है। इंडिविजुअली ये सरल है, मतलब सरल वो भी नहीं है, लेकिन मिस्टिक जो पथ हुए हैं कि भाई इंडिविजुअली हम अपने आप को मास्टर कंडक्टर से ट्यून कर लें। अब इंडिविजुअल ट्यूनिंग क्या हुई, कोई व्यक्ति जो तबला वादक है उसने अपने आप को ट्यून कर लिया, लेकिन ये ऑर्केस्ट्रा है, ये कलेक्टिव काम है। कलेक्टिव काम को इंडिविजुअल ट्यूनिंग से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए संसार में स्पिरिचुअल ग्रोथ की दो एस्पेक्ट्स रहे। एक है व्यक्तिगत प्रगति, जो अलग अलग योग के पंथ हैं जिसमें हम अपने आप को अंदर में ट्यूनिंग करते हैं, भगवान के साथ ट्यूनिंग करते हैं, और हम धीरे धीरे हमारे अंदर का जीवन एक नए ताल, लय, छंद, रिद्म के साथ चलने लगता है। जब वो नए ताल, रिद्म, छंद के साथ चलने लगता है तो हमको संसार के साथ और बड़ी विसंगति महसूस होती है। जब आप भी नॉइज को एंजॉय कर रहे हो तो आपको पता नहीं है, आपने देखा होगा नॉइज में जहाँ खूब शोर शराबा हो रहा है, आप भी शोर कर रहे हो, कौन किसको क्या बोल रहा है, क्या उत्तर दे रहा है, सब हैं करके क्या बोला, तुमने क्या कहा। लेकिन यदि एक व्यक्ति अचानक वहाँ पे सितार बजाने लगे तो उस व्यक्ति को तो बड़ा अजीब लगेगा, जब तक किसी को मालूम नहीं है। तो संसार में जितने भी लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर गए, जैसे ही जाने लगे उनको संसार के साथ एक बहुत बड़ी विरोधाभास प्रकट हुआ। जब तक वो संसार में रमे थे तब तक स्ट्रेंथ पार्ट है कि उनको डिसऑर्डर ऑर्डर लग रहा था,
नॉइज ही उनको म्यूजिक लग रही थी। ऐसे लोग हैं ना जिनको जब तक खूब ज़्यादा शोर शराबा, भीड़ भड़क्का, ये हिंदी के नॉर्थ में कहते हैं लोग इस तरह, भीड़ भड़क्का। देखिए आप दुर्गा पूजा पे पंडाल सस्ता है, लोग देखने जाते हैं, क्या होता है उसमें, क्या ड्रेस है, क्या म्यूजिक चल रहा है। अब दूसरे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में माँ दुर्गा का कहीं ना कहीं स्पर्श प्राप्त किया, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे वहाँ, माँ तुम यहीं पर, या चुपचाप सुबह में जा करके दर्शन करके आ जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल योग तो कर सकता है व्यक्ति, एक गुरु के माध्यम से वो अपनी ट्यूनिंग करके निकल सकता है, इस भीड़ भड़ाके से निकल सकता है। वो कहेगा कि नहीं ये शोर को मैं नहीं सह सकता हूँ, तो निकल जाएगा। लेकिन भगवान का तो प्रयोजन इससे नहीं है, वो तो उसी नॉइज के अंदर में म्यूजिक निकालना चाह रहे हैं, उन्हीं लोगों के माध्यम से जो शोर कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब शोर बहुत बढ़ जाता है धरती पर, यानी कि कोई भी चीज हारमोनी में नहीं है, कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं है, सब कुछ एक कोलैप्स की अवस्था में है, सब अपना अपना राग, एक हिंदी में कहावत है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। तो उस समय भगवान आते हैं मास्टर कंडक्टर की तरह, फिर से सबको ट्यूनिंग करते हैं। कैसे ट्यूनिंग करते हैं, होते एक हैं लेकिन सबको लगता है कि ये मेरे हैं, अनेक में प्रकट होते हैं। भगवान की इस लीला को, जो रास लीला में हम लोग देखते हैं कि कृष्ण एक ही है लेकिन हर एक गोपी समझ रही मेरे साथ नाच रहे हैं, वह अवतार का कर्म होता है। अवतार कोई एक मार्ग नहीं दिखाने आते हैं कि ये पथ है, ये इस तरह से मेडिटेशन करिए, इस तरह से आप ये मंत्र का जप करिए, आप चले जाएंगे। अवतार की ही ये वंडरफुल बात है, अद्भुत बात है, हर किसी को उसके नेचर के अनुसार ले जाते हैं। गोप गोपियों को वो एक लीला करते हैं, उद्धव के साथ एक दूसरी लीला करते हैं, कंस के साथ एक तीसरी लीला करते हैं, अर्जुन के साथ एक चौथी लीला करते हैं। कोई अगर ये सब देखे तो कहे कौन से वाले कृष्ण हो, तो कहेंगे जैसे जैसे यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामि हम। जैसे जैसे व्यक्ति के नेचर होते हैं उसके अनुसार में ले जाता हूं। श्री कृष्ण के बाद राम जी के साथ भी ये जीवन में देखते हैं, उन समझ नहीं पाते उनके नेचर को। जब वाली का वध होता है तो कहते हैं आप कैसे, आपको सुना बड़े धर्मनिष्ठ हैं, तो एक और वो गौतम नारी अहिल्या को स्पर्श के द्वारा ताड़ देते हैं, उनका जो केवट है उसके साथ एक व्यवहार है, वाली को तो पीछे छिप के मार देते हैं। तो समझ नहीं आता है कि आप कर क्या रहे हो। राम और श्री कृष्ण के बाद पहली बार हम एक ऐसा मानव रूप, मानव देह देख रहे हैं जिन्होंने इसी प्रकार की अवतार लीला को धरती के ऊपर उतारा है, माता जी श्री अरविंद। कोई अगर पूछे कि श्री अरविंद का योग क्या है, आश्रम में ये पुरानी एक कहानी होती थी और मैंने सुना है, खुद नहीं सुना है कानों से, लेकिन लोग कहते हैं कि पुराने साधक थे, दादा भी कहते थे, दादा तो इसको दूसरे ढंग से कहते थे, पूछते थे कि श्री अरविंद का योग क्या है, कहते थे पहले कॉम्प्लिकेशन करो फिर उसको ठीक करो माँ को बुला के। लेकिन उसमें एक सत्य है, जो हमारे जीवन की जटिलता है उसको कन्फ्रंट करना। कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं, जीवन जटिल है, नॉइज हो रही है, आप उसको समझेंगे कि अच्छा ये नॉइज है। जब तक आप ये भी नहीं समझोगे कि ये नॉइज है तब तक आप रिजॉल्व कैसे करोगे। तो योग के पहले चरण में वो हम लोगों की कल बात होगी कि इंटीग्रल योग क्या है। दूसरे क्या ये बात थी कि श्री अरविंद का योग केवल श्री अरविंद जानते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, हम सब बोलते हैं श्री अरविंद का योग ये है वो है, और वो उचित है एक एंगल ऑफ विजन से। हमको कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि श्री अरविंद को हम कभी किसी एक सोच में, एक विचारधारा में, एक डॉगमा में, एक तरीके में बांध नहीं सकते हैं। और यदि बांधेंगे तो करेंगे तो वही जो कृष्ण जी ने किया था कि वो बांधा आपने तो बंधन तो तोड़ेंगे साथ में वो, क्योंकि आप नहीं बांध सकते हैं। तो जब हम श्री अरविंद के केवल उनके रिटन वर्ड्स को देखते हैं तो ये चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि ही इज द इनफाइनाइट इन द फाइनाइट। माता जी कितनी सुंदर बात बोलती हैं कि हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो, कौन श्री अरविंद को समझ सकता है। हिज टीचिंग इज वास्ट एज द यूनिवर्स, ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स,
and his teaching is infinite. Teaching is he is as vast as the universe. तो यहाँ पर हमको स्मरण आता है कि श्री कृष्ण संसार के अंदर हैं, ये मेटीरियल विजन है. संसार श्री अरविंद के अंदर है, ये स्पिरिचुअल विजन है. श्री अरविंद से एक बार मजाक मजाक में पूछा था, आई थिंक निरोधा थे, कि श्री कृष्ण के विश्व रूप की तो हमने बात सुनी है, आप भी कुछ अपने विश्व रूप के बारे में बताइए. उस विश्व रूप को देख करके तो लोग घबरा गए थे, कुछ इस तरह की बात. तो श्री अरविंद उसको ये नहीं कहते हैं कि मेरा कोई विश्व रूप नहीं हो, कहते हैं हाँ मेरा विश्व रूप है लेकिन ऐसा भयानक नहीं है. श्री कृष्ण जैसा कि दांतों के बीच में युद्ध था, वो मजाक मजाक में कहते हैं, क्योंकि वो उस समय वह रूप दिखाना था, वो उस रूप में प्रकट हुए थे श्री कृष्ण. तो एक दृष्टि है जहां हम श्री अरविंद को एक सीमित जन्म, सीमित देह, सीमित उस दृष्टि से देखते हैं. और एक दृष्टि है कि संसार में कभी वो समय नहीं था जब माता जी श्री अरविंद किसी न किसी रूप में धरती के अंदर नहीं थे. और ये केवल एक सेंटिमेंटल थॉट नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है. लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि संसार को अगर हम बाहर से पकड़ें तो बड़ा विचित्र लगता है. क्या लॉजिक है संसार की? आफ्टर ऑल मुगल आए, फिर इंडिया की केवल इतिहास को देखिए, ऋषि मुनि थे, फिर इन्वेजन हो गया, उसके बाद ग्रीक्स आए, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिश आए, कुछ और यूरोपियन आए, फिर इंडिपेंडेंस मिल गई, फिर वो पॉलिटिशियंस आए, ग्रीडी पॉलिटिशियंस. मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? ये क्या चल रहा है? ये पूरा खेल समझाया जा सकता है एक एक तरीके से, पर इस खेल का सूत्र एक सूत्रधार के पास है, और वो सूत्रधार प्रत्येक युग में आता है और उसको दिशा देने का काम उसका है. कोई भी जो उस्ताद होता है ना, जब उसके सामने कोई नौसिखिया बैठा होता है जिसको कुछ नहीं आता, वो तबले से नॉइज या राग भी नहीं आता, वो मुंह से केवल, तो उसको पहले वो ये नहीं बताता है आओ मेरे राग को दोहराओ, ऐसा नहीं करता है. वो कहता है बच्चा पहले तू अपना गला ठीक कर, आइसक्रीम खाना बंद कर, गर्म पानी से रोज गरारा कर, तू अपने जीवन में संगीत ला, हर चीज को तालबद्ध करके कर. वो सीधा राग नहीं सिखाता है, जो सीधा राग सिखाते हैं उनको मालूम नहीं है संगीत के बारे में. ऐसे करते करते फिर उसको एक्सपोज करता है कि देख सुंदर म्यूजिक क्या होता है, सुनाता है. मुझे किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी एक बार, कि श्री अरविंद की पोइट्री पढ़ने से हमारे अंदर का पोइट जाग जाता है. कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनको श्री अरविंद की पोइट्री का पूरा वो करके पोइट जाग गया, क्योंकि वो रिद्म ये सब आती है, अपने आप आती है, वो साउंड ये सब दे ऑल कम इनसाइड. तो इस तरह से करके धीरे धीरे आपको वो ट्यून करता है, और जब आपकी ईयर्स ट्यून्ड हो जाते हैं तब वो कह के कहता है कि तबले पर चल, पहले फील कर, फिर इस पे धप धप कर, महसूस कर, फिर लंबा एक प्रोसेस है. अवतार इस तरह से कर्म करते हैं. अवतार आके मैजिक मिरेकल नहीं करते हैं. और हर किसी को एक व्यक्ति जो एकदम नॉइज में है उसको एक पूरी प्रोसेस है. एक व्यक्ति जिसके कान ट्यून्ड है उसको दूसरे ढंग से. एक तीसरा व्यक्ति है जो इंडिविजुअली बजाना जानता है लेकिन बाकी सबके साथ वो कैसे पेशेंस रखे, कैसे उनको भी सिखाए, उसको तीसरे ढंग से बताते हैं. उसको कहते हैं तुम इनको थोड़ा सा ट्यून करो. सब सेक्शंस हैं, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग ढंग से काम करते हैं, कोई एक तरीके से लिमिटेड नहीं होते. श्री अरविंद के साथ भी हम यही देखते हैं. वो क्या करते हैं, हमको ट्यून करते हैं पहले कि दिव्यता क्या होती है. हमको तो पता ही नहीं है, हम लोगों ने किताब में पढ़ रखा है एकमेव द्वितीयम, इसका क्या अर्थ है, सोहम अस्मि तत्वमसि, उस पर डिसर्टेशन थीसिस लिखी जा सकती है. जो कुछ भी है ये वो अलग अलग, लेकिन वो है एक ही. बहुत सुंदर लगेगा पढ़ने में, लेकिन वो एकत्व तो क्या है. तो हम लोगों कैसे परिचय कराते हैं उससे, अपने जीवन के द्वारा. श्री अरविंद का जीवन उदाहरण है हम सबके लिए, और ये मेरा मानना है, कई बार मैं इस विषय पर बात कर चुका हूँ. लाइफ डिवाइन जरूर पढ़िए, सिंथेसिस ऑफ योगा पढ़िए. सावित्री खैर अद्भुत है, अलग उसमें है. सावित्री इनफैक्ट जीवनी है, पर श्री अरविंद के योग को प्रैक्टिस करने के लिए अगर एकदम प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप श्री अरविंद के जीवन को पढ़ें.
बाहर से मत पकड़े, अंदर से पकड़े। बाहर से पकड़ने से क्या होता है, अच्छा 40 साल अगर हम एक कमरे में बंद हो जाएंगे तो हम सुप्रामेंटल के अधिकारी हो जाएंगे। 40 नहीं, सॉरी 26 से 50, 24 साल नहीं, पागलपन के अधिकारी हो जाएंगे, चांस ये है। लेकिन अंदर से अगर हम पकड़ें तो श्री अरविंद के जीवन में हम देखते हैं त्याग। किस चीज़ का त्याग करते हैं? कुछ लोग होते हैं जो श्री अरविंद के कक्ष में जाते हैं और वो कहते हैं अरे अलमारी है, इसके अंदर इतने सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट हैं। उनको ये पता नहीं है कि श्री अरविंद के जीवन में एक भोजन की बात जो मुझे तो बड़ी टच करती है, कि वो कैसे उनके सुबह में 9 बजे नाश्ता आ रहा है, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, एक दिन तो हद हो गई 4 बजे फर्स्ट मील। श्री अरविंद जागे हुए हैं, मील की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, पर किस तरह से वो ये मैनेज करते थे। माँ दिन रात श्री अरविंद के काम में, और उनका काम मतलब श्री अरविंद का तो सारा काम सृष्टि का कार्य है, उसमें लगी हुई हैं। उनको खुद का विश्राम, उनकी खुद की सुविधाएं, इन सबको भूल करके लगी हुई हैं। एक होता है त्याग जो दिखावे वाला त्याग होता है, बाहर से हमने त्याग दिया, अब हम एक कमरे में रहते हैं, इतना खाना देते हैं, खाते हैं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। असल चीज है कि हम उनके काम में इतना अधिक मगन हो गए। मीरा से कोई पूछता कि अरे आपने तो बड़ा त्याग किया, तो मीरा क्या कहती? मीरा ये नहीं कहती कि मैंने त्याग किया, मीरा कहती मीरा हो गई मगन, लागी लागी रे लगन, ये कहती। अब लोग बाहर से ऐसे देख रहे हैं। तो श्री अरविंद माता जी के जीवन को जब हम अंदर से पकड़ते हैं तो वही हमारे लिए ट्यून करने लगता है कुछ 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 दिव्यता क्या होती है। पहली चीज हम ये सीख जाते हैं, स्वार्थ और दिव्यता साथ नहीं जाती। अहंकार की तुष्टि के लिए जीवन, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जीवन, कामनाओं के विस्तार के लिए जीवन, इसका दिव्यता से कोई संबंध नहीं। कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल माँ श्री अरविंद के जीवन को हम देख लें। पर इतना भी काफी नहीं है। फिर दिव्यता की सुगंध कैसी होती है, दिव्यता का स्पर्श कैसा होता है, दिव्यता के अंदर संगीत कैसा होता है। तो हम देखते हैं कि माता जी श्री अरविंद ने इसके लिए भी हम लोग को, माँ ने एक जगह लिखा है कि वो क्या चाहती थी, ए प्रोडिजल ऑफ अ रिच डिविनिटी शी गेव हर सेल्फ टू ऑल सो दैट ह्यूमन नेचर कैन एक्लिमेटाइज। भगवान का एटमॉस्फियर कैसा होता है, भगवान के सानिध्य में रहने से कैसा महसूस होता है। और इसलिए उन्होंने आश्रम में वो दिव्यता की सुगंध। आखिर क्या कारण है कि लोग 7 समुद्र पार से खिंच करके आते हैं? क्या मिस करते हैं? ऐसी कौन सी चीज है? सब तो मिलता है बाहर। लोग कहते हैं ना आजकल सब कुछ जो बाहर मिलता है भारतवर्ष में मिलता है, पर यह सच है कि भारत में कोई चीज मिलती जो बाहर नहीं मिलती है, और वह है दिव्यता की सुगंध। तो वो दिव्यता की सुगंध को उन्होंने आश्रम के अंदर, पता नहीं चलता है क्या है। कोई अगर पूछे आपसे कि आप क्यों जाना चाहते हो आश्रम, क्या ऐसी स्पेशल बात है, क्या वहाँ का खाना बड़ा अच्छा है? अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रसाद तिरुपति के प्रसाद से ज़्यादा टेस्टी है, ये भी नहीं कह सकते हम। है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है उसमें? आप बोलोगे कि दूध, ब्रेड, दही ये सब मिलता है, केला, अच्छा, और अगले दिन क्या मिलता है? अगले दिन भी यही मिलता है, अगले दिन। पर क्या है जो अच्छा लगता है? क्या रहने के लिए आपके लिए 5 स्टार एकोमोडेशन? ऐसे आश्रम है जहाँ पे आपके स्टेटस के अनुसार आपको रहने की सुविधा है, आपके स्टेटस के अनुसार दर्शन करने की सुविधा है, स्पेशल दर्शन, डीलक्स दर्शन, या कुछ ऐसा नहीं है। तो क्या आपको मिलता है? वही तो चीज है दिव्यता की सुगंध, आश्रम। तो वो हमको ट्यून करता है। जब लोग अक्सर आने जाने लगते हैं ना, तो उनको मुश्किल होती है, बाहर जाते हैं तो उनको महसूस होता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तबले को ट्यूनिंग हो रही है। फिर तीसरे लेवल पर वो कैसे ट्यूनिंग करते हैं? उनकी वाणी जब हम पढ़ते हैं तो ट्यूनिंग होती है। हम सब तो कैकोफोनी मतलब नॉइज लगाने में लगे थे, तब हमारी ट्यूनिंग होती है, तब हमको पता चलता है क्वाइट्यूड, ये सब कैसा हमारा जीवन होनी चाहिए। माता जी ने तो सेंसेस के उस पर भी इन्वेट कर दिया। श्री अरविंद तो ट्यूनिंग करते हैं, जो छठी इंद्रिय है वहाँ से शुरू करते हैं। छठी इंद्रिय इज माइंड।
गो थ्रू द बुक्स, माइंड की अपने आप ट्यूनिंग होने लगती है. इटर्नल क्या है, इटर्नल की रिद्म क्या है, भगवान इस सृष्टि में क्या चाहते हैं, ऑटोमेटिकली ट्यूनिंग होने लगती है. तो हाँ, सावित्री है जो इनर ईयर को सुनाई देती है, वो एक अलग लेवल पे ट्यूनिंग करती है. वो तो सीधा जैसे आपने शुरू किया तो अपने आप आपका तबला रिस्पॉन्ड करने लगेगा. वो तो इस तरह की अद्भुत है. माता जी ने कहा हाँ लेकिन मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने तबला भी नहीं देखा है, सितार भी नहीं देखा है. तो माता जी कैसे ट्यूनिंग करती हैं? मदर्स म्यूजिक. टच किए हुए माता जी ने कितने वस्त्र खंड, उनके चित्र, हर लेवल पे. आश्रम की अगरबत्तियां जो विशेष रूप से बनी हैं, उनके अंदर नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं. केवल अगरबत्ती नहीं है, रियली हर एक सेंसेस के माध्यम. आई हैव सीन दिस एक्चुअली, कि आश्रम की अगरबत्ती जब हम लाइट करते हैं तो वो एक अलग लेवल पे कार्य करती है, फिजिकल सेंसेस के माध्यम से. चक्षु, कान, टच, स्पर्श, टेस्ट और घ्राण इंद्रिय, आश्रम का भोजन, फूलों की सुगंध. तो हर चीज से जब वो दिव्यता हमारे अंदर इन्वेट करती है तो एक एटमॉस्फेयर बनाना शुरू करती है. सबसे पहले म्यूजिक के लिए कैसे तैयार होता है व्यक्ति? जब वो नॉइज और म्यूजिक में भेद करना जान जाता है. आज ही किसी ने बड़ा सुंदर एक व्हाट्सएप पे लिखा कि आलोक भाई मैं क्या करूं, वहाँ बाहर जाके, वहाँ एक जगह का नाम लिया रिलीजियस प्लेस का, कहा लोग मेडिटेट करते हैं उसके बाद इतना लाउड भजन शुरू कर देते हैं. तो आश्रम में रहने लगो तो आपकी आदत चली जाती है, क्योंकि आपको वो पता चलता है कि वो भजन नहीं है, ना भगवान को प्रिय लगेगा ये कर्णभेदी स्वर. भगवान तो बड़े सूक्ष्म हैं, बड़े जेंटल हैं. ऐसे बात कर, देखिए भगवान कैसे बात करते हैं. श्री अरविंद कैसे विस्पर, जेंटलमैनली. भगवान ऐसे नहीं तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कमांड उनको देने की आदत नहीं है. ये श्री अरविंद के जीवन को पढ़ें. तो अवतार क्या करते हैं? मानव लीला में मानव रूप धारण करके हम लोगों जो भूल गए हैं दिव्यता कैसी होती है. श्री कृष्ण और श्री अरविंद के बीच में 4,500 वर्ष का अंतर है. हम भूल गए. किताबों में है कृष्ण लीला डांस करते थे, उसका मीनिंग भी भूल गए. एनालाइज करके मीनिंग भूल के हमने क्या किया? श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है, हमने उसका क्या बना दिया? नाम नहीं लूंगा मैं उस नृत्य का क्योंकि पर ये फैक्ट है. हम लोगों ने वो 2 छड़ी लेके कृष्ण जी की और कृष्ण गोपियों को क्या किया? प्राणिक जगत का एक आवेग बना दिया. कृष्ण जी गोपियों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए कि वो, सोचो जिन्होंने कृष्ण जी के साथ नाचा होगा वो क्या उन्होंने अनुभव किया होगा. क्या उन्होंने एक क्षण को भी ये सोचा होगा, महसूस किया होगा कि कृष्ण जी हम लोगों को मतलब एक बाहरी डांस स्टेप सिखा रहे हैं ऐसे टेक्निकल. वो नाच रहे थे और आनंद में मग्न होकर ऑटोमेटिकली आप ट्यून्ड होते जा रहे थे. तो चूंकि हम भूल गए, जब हम भूल जाते हैं, भगवान ट्यूनिंग करके जाते हैं, धीरे धीरे हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं काल की गति में जो ओरिजिनल स्पंदन जो अवतार छोड़ के जाते हैं उसमें कवर होने लगता है. जैसे शुरू में जब आप लाइव कंसर्ट सुनते हो तो और किसी चीज़ का वो स्थान नहीं रहता है. रविशंकर मैंने सुना है, वो सितार प्ले करें, आप मगन हो जाते हो. बाद में टेप रिकॉर्डर मिल गया, आपने रविशंकर का कैसेट लगाया, साथ में कुछ और होने लगा बाहर में, तो वो धीरे धीरे दबता चला जाता है ओरिजिनल स्पंदन. तो संसार को फिर से एक नए ताल, गति, छंद, लय की जरूरत होती है. लेकिन ये वही मुरली की तान नहीं होती है, उसके पीछे का भाव वही रहता है, लेकिन वो एक कदम आगे. मां कहती है ईच अवतार comes to add a rung in the eternity of becoming. Each avatar is the forerunner of a more perfect future realization. क्योंकि वो धर्म से ग्लानि भी भगवान ही ऐसा करते हैं कि अब एक नई गति, नए तार, उसी चीज को रिपीट करने के लिए नहीं आते हैं. भगवान की ब्यूटी है सृष्टि में कोई ये बता दे कि एक भी चीज रिपीट होती हो. हम कहेंगे हाँ होता है रोज दिन रात, नहीं होता है. हर दिन नया होता है, हर क्षण नया होता है, हर पत्ता नया होता है.
एवरी मोमेंट द एंटायर यूनिवर्स इज चेंजिंग. ये अद्भुत बात है सृष्टि की. और इससे एक तो टेक होम पॉइंट ये होता है कि हर क्षण हम बदल सकते हैं हर चीज को. तो जब ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की खेल को जरूरत होती है, बहुत 3000, 3500, 4000 साल लोगों ने कृष्ण जी का जो गेम उन्होंने शुरू किया था खेला, फिर धीरे धीरे उसको भूल गए. तब श्री अरविंद आते कहते अब तुम्हें मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ. और इस प्रकार से वो शाश्वत हैं, लेकिन काल के अंदर भगवान का नर्तन, ये उनकी. वही शिव जब ट्रांस में चले जाएं तो वो परम शिव हैं, कोई नहीं पहुंच सकता उन तक. वही शिव जब नृत्य शुरू करें तो पूरी सृष्टि के अंदर या तो प्रलय आ जाती है या नव सृष्टि प्रारंभ हो जाती है. तो शाश्वत का, इटर्निटी का, टाइम में, ट्रांजियंस में, काल में नर्तन, उसी को लीला कहते हैं. और जैसे जैसे हम लोग उस नर्तन जो नया रिद्म है उसके साथ जुड़ते जाते हैं, हम कृष्ण लीला या अब हम ऐसे कहें श्री अरविंद लीला का हिस्सा बनते जाते हैं. जुड़ने के पहले हमको अपने आप को एक्लिमेटाइज करना है, समझना है. ऐसे नहीं होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं कैसे भी कर रहे हैं, वो एक अलग है. उसमें बहुत वैरायटी है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ढंग से. तो जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं अलग अलग लेवल्स पे, वैसे वैसे हम इस नई श्री अरविंद रास महारास का हिस्सा बनते जाते हैं. और जैसे जैसे हमारी ट्यूनिंग होती जाती है, पता कैसे चलेगा, कौन जज करेगा, किसी को जज करने की जरूरत नहीं है. संगीत का परिणाम है आनंद. हमारी ट्यूनिंग जैसे जैसे भगवान के साथ होती है, आनंद अंदर में बढ़ता जाता है. जैसे जैसे हम बेढंगे होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर दुख. सबसे ज़्यादा बेढंगा कौन करता है? अहंकार और स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, कामना है. वो हमको अपना राग, और अपना राग हमको धीरे धीरे बहुत दूर ले जाता है. और जैसे जैसे हम उसको छोड़कर भगवान हमसे क्या चाहते हैं, और चूंकि ये बड़ा कठिन होता है, श्री कृष्ण ने तो एक दे दिया, गीता अद्भुत ग्रंथ है, तो भगवान एक नया रूप धारण करके आते हैं. और इस बार तो श्री अरविंद ने, भगवान ने हद कर दिया, मतलब हदों को पार कर दिया. उन्होंने एक गीता नहीं दी, हमारे हाथ में 35 गीता दे दी. और गीता के बाद ऊपर जो गीता में हिंटेड है, सावित्री दे दी. माता जी ने कहा ये भी नहीं बच्चे समझेंगे. उन्होंने अपनी 17 वॉल्यूम प्लस और 13 जो कन्वर्सेशन, वो सब दे गए कि तुम्हें कोई समस्या होगी ट्यूनिंग करने की, यहाँ पर है. कैसे जीवन जीना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, प्रेम क्या है, कर्म क्या है, कार्य क्या है, जॉब कैसे करोगे, सारी चीज़ें उन्होंने, भोजन कैसे करना है. उनको पता है बच्चे तो अब ट्यून कैसे करेंगे. जैसे जैसे हम इसको करते जाते हैं, वैसे वैसे हम उनके साथ ट्यून होते जाते हैं. तो शाश्वत का काल की गति में ना केवल नर्तन, बल्कि उसमें एक नया ताल, छंद, लय लाना, उसी को अवतरण कहते हैं. ये काम केवल अवतार करता है. जो साधारण गुरु मिस्टिक होते हैं, वो कहते हैं यहाँ नॉइज है, तुझे मैं इंडिविजुअली बता देता हूँ, थोड़ा म्यूजिक तेरे अंदर जगा देता हूँ. अब वो इंडिविजुअली मतलब 100,000 हो सकते हैं, पर इंडिविजुअली तो इस म्यूजिक नॉइज के क्षेत्र से बाहर चला जा. लेकिन अवतार कहते हैं उनका क्या होगा, जो तो नॉइज है, उनका क्या दोष है, उनको भी तो कोई बताए कि संगीत क्या होता है. बताते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ऑब्स्टिनेटली रिफ्यूज कर देते हैं, असुर जो यंत्र उपकरणों को तोड़ने में लगे हैं, फिर वो कहते हैं तुम्हें मैं इस अभी प्लेइंग फील्ड से बाहर कर दे. रेड फ्लैश, रेड कार्ड. परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम. Each avatar in the eternity of becoming is the forerunner of a more perfect future realization. सुपर माइंड में कि जो सुपरमेंटल बीइंग कैसा होगा, सुपरमैन कैसा होगा, इस पर बड़ी डिस्कशन होते हैं. एक सिंपल आंसर है, माता जी श्री अरविंद जैसा होगा. किसी ने माँ से पूछा व्हाट इज द डिवाइन, माँ कहती द डिवाइन इज व्हाट यू अडोर इन श्री अरविंदो. बस सिंपल है, पढ़ लीजिए उनका जीवन, यू विल सी इट. किसी भी तरह से आप देखिए, आप सिंपल सी चीज देखिए, ऐसी उन्होंने अद्भुत चीजें लिखी हैं, लेकिन केवल श्री अरविंदो.
कोई ये नहीं महायोगी महर्षि ये वो पहन करके मालाएं, जैसे आजकल जो आप देखते हो अहंकार का फ्रैंक डिस्प्ले, महत्वाकांक्षाओं का इतना बड़ा, थोड़ा सा कोई काम करता है रिकॉग्निशन चाहता है। लुक एट श्री अरबिंदो। तो शत शत नमन। इन द इटर्निटी ऑफ बिकमिंग ईच अवतार इज द फोररनर ऑफ ए मोर परफेक्ट फ्यूचर रियलाइजेशन. But men have a tendency to deify the avatar of the past in opposition to the avatar of the future. अवतार ऑफ द पास्ट एक कड़ी है भविष्य की ओर जो ले जाती है. माँ ये नहीं कह रही आइदर और, माँ कहती है यू शुड अंडरस्टैंड कि वो पास्ट में जरूरी था, भविष्य के लिए अब कुछ और चीज है, तो उसका अपना स्थान है. हमको ऐसे नहीं बन जाना है मुल्लाओं की तरह यही एक मार्ग है, नहीं. जिसके लिए जो मार्ग, जो जहां खड़ा है वो मार्ग है, लेकिन भविष्य की ओर जाना है तो उसका द्वार मां श्री अरबिंदो से खुलता है. इसका मतलब ये है मैन हैव ए टेंडेंसी टू डेफाई द अवतार ऑफ द पास्ट इन अपोजिशन. ये वो कह रहे हैं कृष्ण बड़े या राम बड़े या श्री अरविंद बड़े, ये प्रश्न नहीं उठाना है. जिसको जो भाए मन भावन, कृष्ण प्रिय हैं, ये तो भारत की सनातन सभ्यता है. ये अपोजिशन वो अपनी जगह जिसका जो मार्ग है. लेकिन अगर रूपांतरण धरती पर सत्य की स्थापना की बात है और एक मनुष्य के अंदर ऐसा मूलचूल परिवर्तन कि वो ये रोग शोक ये सब चीज़ों से मुक्त हो जाए, तब मां श्री अरविंद है. आपकी अभिप्सा क्या है वहां से पकड़िए, वहीं पर उत्तर है. Yet men have a tendency to deify the avatar of the past in opposition to the avatar of the future. Now Sri Aurobindo has come and his message faces the same opposition as of those who have gone before him. अपने समय में क्राइस्ट को भी अपोजिशन हुआ था, बुद्ध को हुआ था, श्री कृष्ण को हुआ था, उनके अपने कुल के लोगों ने. और अब श्री अरविंद आए हैं तो his message faces the same opposition. But tomorrow will prove the truth of his teaching and his work will be done. तो चलें हम लोग अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, परफेक्ट ट्यूनिंग का ही नाम रूपांतरण है. जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, आप सितार के सामने बैठोगे और उस पर उंगलियां फेरोगे और वो अपने आप जो म्यूजिक चाहिए उस समय आवश्यक है वो बजाने लगेगा. आप बांसुरी को मुख पे रखोगे, आप ये नहीं अच्छा ये राग बजानी है ऐसे, वो अपने आप आपका मुंह बांसुरी सब कुछ जो उस समय राग की आवश्यकता है. यही तो है ना कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट. सुदर्शन चक्र कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट है. वो वहां जाते हैं जहां श्री कृष्ण चाहते हैं. वो चाहे तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे, कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट है. जाएगा वापस श्री कृष्ण के पास आ जाता है. तो वो कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही है रूपांतरण. यानी हमारे पूरे देह मन प्राण ऐसे ट्यून्ड हो जाएं कि बिना किसी फ्रेम और हम लोग फ्रेम्स में एक्ट करते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वह करें जो मां श्री अरविंद हमसे चाहते हैं. और उसका जो सबसे सरल उपाय जिसके साथ हम लोग क्लोज कर सकते हैं, सिंपलेस्ट वे फॉर द योगा, लव श्री अरबिंदो, लव द मदर. और सिंप्लीफाई, श्री अरविंद ने और सिंप्लीफाई कर दिया, लव द मदर. और सिंप्लीफाई, नो दैट द मदर लव्स यू. नमस्ते. ओम नमो भगवते. आजिर आलोचनार विषय होची श्री अरविंद इटर्नाल इन ह्यूमन फेस, जार ओडिया होची मानसी तनुरे शाश्वतंक अभिव्यक्ति. निर्दिष्ट भाव में ये धाड़ीटी आमर आसी सावित्री महाकाव्यर 6ठ अध्यायर प्रथम सर्गर शेष धाड़ी. प्रसंगटी खाली प्रसंग क्रमे कही रखे जे धाड़ीटीर अर्थ थिला या जे मद्र देशर नरपति अश्वपतिंकर कन्या सावित्री बोधहुए आमर प्राचीन साहित्य एकमात्र दृष्टांत जी कि निजर पति निर्वाचन करने अरण्यरु अरण्य ग्रामरु ग्राम नगररु नगर को परिभ्रमण करथिले.
यही परिभ्रमण काल रे से जहाँ को भेटी थिले सी होचंती साल्लो देशर राजकुमार सत्यवान एवं से गोटे मुहूर्त रे से तांको विवाह करिवार निष्पत्ति नहीं निज राज्य को फेरी आसले से को नारद उपस्थित रहिचंती पिता अशोपति निकट रे माता मालवी निकट रे सी जिते शुणुंट से कहते ना ठीक सत्यवान विषय जहाँ कहुच्ची सावित्री तांको जो भाई भाव में अनुभव कर सत्य किंतु तांकर आयुष निर्दिष्ट ही रही आज ठारू 1 वर्ष पूर्ति रे से मृत्युवरण करेंगे तेणु तांको विवाह करवाटा ठीक हम ना। सावित्रींकर उत्तर थिला या जे सेथरे तांकर किछि जायस नाही तांकर आयुष केते दिन काहेकि ना सत्यवानंकर मुखमंडल रे शाश्वतंकर से स्मितहास्य को से देखि परिचंती से ईश्वर को देखिचंती तांका भितर जे थरे ईश्वर को मनीष भितर देखे तार कौन भय क्या भय ना मृत्यु को ना जीवन कौन झड़झंझा को ना कौन एक विपद को। तेबे आमर एठी प्रसंगटी होची आमे श्री अरविंद को अवतार भाव में काहेकि ग्रहण करिछु किपरि भाव में केउ केउ कारण आमको अनुप्रेरित करिछि स्वीकार करे आमे स्वीकार करिछु जे सही होचंती ए भविष्यतर अवतार। बंधुगण ये कही रखे प्रथम आमर टिके भितरे द्वंद्व रही जाए जे देवता अवतार कौन समान देवता अवतार समान नुहंती आमे प्रथम जानी रखिबा। देवता माने होचंती शुभ दैवत सत्ता से माने ईश्वरंकर कर्म करबा पे उद्दिष्ट तेणु ईश्वरंकर कर्म कला बेले से माने तार व्यतिक्रम करती नहीं। अग्नि सूर्य वरुण इंद्र वायु एमान को जो कर्म ईश्वर निर्धारित करछंती से माने ताही करिथांती। मनीषर सुख दुख रे माने संपृक्त होती नहीं। मनीषर दुख कष्ट रे एमानकर कौनसी प्रतिक्रिया न थाए एमाने शुभ दैवत सत्ता सत्य किंतु मनीष पई एमानकर अश्रुमुंचन करिवार प्रश्न उठु नाही। से निर्विकार सत्ता तांको पे उद्दिष्ट कर्म करिथांती किंतु अवतार आउ देवता भितर मूल पार्थक्य होचे या जे निरवधि काल धरी जो समयर प्रवाह स्रोत भितर दे बेले बेले गोटे गोटे कालखंड सेमती गोटे शुभ कालखंड आसे जो कालखंड भितर ईश्वर मानुषी रूप रे ए पृथ्वी रे अवतार ग्रहण करती। तेणु सेटा गोटे एक सार्थक समय से कालखंडटी एक सार्थक समय समयक्रम एहीपरि विभिन्न समय ईश्वर को अवतार ग्रहण करने को पड़ी किंतु से अवतार कौथरे ना से मानुषी तनुरे ग्रहण करते। जेतेबेले जड़े अवतार ए पृथ्वी को आसती सेतेबेले से कौन करती ना गोटे नूतन चेतना गोटे नूतन उपलब्धि मनीषर चेतना भितर संचारित कर दियंती। कवि भितर से कविता रूप में प्रकाश पाई जाए शिल्पीर कलम तार तुली रे से एक अपरूप रूप धारण करी तार शिल्पकला प्रकाश पाए सेमती विज्ञान तार प्रभाव रे वैज्ञानिक उद्भावन करे बहुत नूतन नूतन तथ्य। तेणु अवतारंकर उपस्थिति पृथ्वी उपरे तार चेतन एवं अवचेतन सबु स्तर उपरे क्रिया करे। श्री अरविंदंकर जो कविताटी रही द गॉड्स लेबर से कविताटी से प्रसंगटी को भल भाव ए गॉड्स लेबर कवितार से ए प्रसंगटी को से विशेष भाव में आलोचना करछंती जे मनीषर जो दुख दुर्दशा तार जो जंत्रणा जो कर्दमाक्त जीवन जेतेबेले अवतार पृथ्वी को आसती मानसिक तनु नहीं सी ता भीतर को ओह्लाई आसती से शून्य रही कौन से कार्य करती नहीं। अवतारंकर वैशिष्ट्य होची से पृथ्वी रे मनीष पाई समग्र जगत पाई पृथ्वी पाई बा तार प्रकृति पाई से निजे से कर्दम माटी कादुआ भितर को निजे ओह्लाई आसती। मनीषर अवचेतन उपर क्रियाशील हुए ईश्वरंकर से करुणा। तेणु अवतारंकर उपस्थिति पृथ्वी एक सौभाग्यर कथा। तेबे आउ टिके स्पष्ट भाव में आम बुझा जे श्री अरविंद पूर्वर भारत वर्ष में 3टी अवतारंकर कथा कहुई राम कृष्ण एवं बुद्धंक कथा।
बुद्धंकर पूर्वर ये जो दुई अवतारंकर कथा कहुई मुख्यतः आम रामचंद्र कथा विचार करा जाओ। ये जो मनुष्य तनुरे जन्म होते जे भगवान रामचंद्र तांकर कौन वैशिष्ट्य थिला, कौन से प्रतिष्ठा करने को आसी से आसी पृथ्वी रे प्रतिष्ठा करने को सत्यर कौन सी प्रकार परिस्थिति रे कौन सी प्रलोभन बा कौन सी आसक्तिर चापरे मनीष सत्य ठारू दूर को जीवा उचित नुहे ताही से तांका जीवन दशारे से प्रमाणित करदेले। तो पितृसत्य पालन करने निजर संपूर्ण एक प्राक तारुण्य काल से 14 वर्ष वनवास को स्वीकार कर कहीं ना पृथ्वी रे प्रतिष्ठा करने जे यही हूँ जे सत्य को जेकोसी उपाय जेकोसी अवस्था ताकू त्याग करा जाई परिबो नाही। से गोटे जिनस प्रतिष्ठा कले सबू विरोध सत्वे आम रामचंद्र जीवन रे देखिले जे सी शेष जाके संपूर्ण एकनिष्ठ ही रहिले। तांकर सत्यनिष्ठा तांकर एक व्रत जो से ग्रहण करिसेंती तार दृष्टांत आम अन्यत्र देखुना। अंततः से समय आउ गोटे जिनस से प्रतिष्ठा कले एक पत्नी व्रत। ता पूर्वरु तांकर पिता मध्य बहु राणी तांकर थिले, बहु पत्नी तांकर थिले, किंतु रामचंद्र जीवन रे देखंतु आरंभ शेष पर्यंत से गोटे पत्नी को स्वीकार करछंती। ताही से सत्य को से पृथ्वी रे से समय से प्रतिष्ठा कले मानव समाज रे। दृढ़ता सत्यनिष्ठा बलवीर्य सामर्थ्य एवं सनातन शक्ति को नहीं गोटे मनुष्यतर प्रचंड शक्ति को पराहत करछंती से प्रतिष्ठा करछंती एवं निज राज्य रे से जो शासन प्रचलन कले अवतारी पुरुष रामचंद्र आमे एते हजार वर्ष पर आज के 7000 वर्ष तले जहाँ जो रामचंद्र का राजत्व थिला एबे ताको आमे स्मरण करूछु जे रामराज्य कहले ही बुझा जाए जे से राज्य रे सत्य न्याय धर्म ये सब प्रतिष्ठित थाए। कृष्ण का अवतार भी आम देखिले जे भगवान कृष्ण आसी जहाँ को श्री अरविंद बहुत मान्यता देइछन्ति एवं अधिमानसर देवता भगवान कृष्ण ताले से जो आसी तांकर उद्देश्य कौन थिला? तांकर उद्देश्य भगवत गीतार स्पष्ट से स्पष्ट भाव लिखिछन्ति परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। दुष्ट मान को निधन करने साधु मान को परित्राण करने से निज को प्रकाश करछन्ति। तेणु कृष्णंकर जीवन काल भितर समस्त घटना गुड़ी को जदि आम लक्ष्य करवा गोटे गोटे करी जे से सत्य ही प्रतिष्ठित होती। सबुठ बड़ सत्य है भगवत गीता। भगवत गीतार कर्मयोग राजयोग एवं तांकर भक्ति योग ज्ञान योग प्रभृतिर जो सब जोगर कथा कहले से योग विषय आमर एत बेसी स्पष्ट धारणा नथिला। तेबे जेतेबेले धर्मर ग्लानि हबो जदा जदा ही धर्म से जेतेबेले धर्मर ग्लानि हबो सेतेबेले से अभ्युत्थान अधर्म को नाश कर धर्मर प्रतिष्ठा करने पे ए पृथ्वी को से बारंबार आसबे। यही है आमर अवतारर साधारण भाव में अवबोध। एमाने देवता नुहंती, एमाने स्वयं ईश्वर तांकर ईश्वरत्व को धारण करे तांकर विथ फुल डिविनिटी से माने का मनुष्यर शरीर रे अवतीर्ण होइथांती एवं तांकर कार्यकाल भितर से जो सत्य से प्रतिष्ठा करने को आसीथांती से सत्य को से प्रतिष्ठा करिथांती। तेणु आमर मुनि ऋषि माने श्री अरविंद होचंती अतिमानस अवतार। अतिमानस शक्ति आलोक को पृथ्वी को अवतरण करई आनिचंती स्व सिद्धि बल स्व साधना बल से अतिमानस होची तांकर सिद्धि। यही भविष्यतर जो अवतार श्री अरविंद तांकर सिद्धि। तेणु अतिमानसटी कौन कौन पृथक ताहार आमर पूर्ववर्ती अवतार मान ठारू? कारण आमर भगवत गीतार कहुई योग कर्मसु कौशलम, किंतु अतिमानस आम रूपांतर योगरे केवल कर्म कुशलता को एते प्राधान्य दि जाइनि। दि जाइए काहाकू ना जो सिद्धि श्री अरविंदर ये पृथ्वी रे क्रियाशील अतिमानस से शक्ति को पूर्णांग योग माध्यम निज भितर जागरित करवा एवं कर्मकौशलता भितर से केवल सीमित रहिब नहीं, से आमर शरीर मन प्राण को मध्य रूपांतरित करिब।
कारण पृथ्वी को गुरुत्व न दे कारण दीर्घ काल धरी आमर आध्यात्मिक परंपरा बुद्धंठ आरंभ करूँ जैन आरंभ करूँ ये आमर हिंदू जो साधु सन्यासी सन्थ आमर शास्त्र एथिरे आमे गोटे जिनस लक्ष्य करूँ जे समस्ते पृथ्वी को परित्याग करिवार कथा कहते कहीं ना एठी किछि आउ हेई परिबो नाही ए पृथ्वी जहाँ एठी साधना करि होबनी एठी कौन से मते साधना करी ए परम पुरुषों सहित लीन हो जावाटा ये हूँ साधकर लक्ष्य सन्यासीर लक्ष्य तेणु ए प्रकार जो मानसिकता वेदांती मैंने अवश्य स्वीकार करते जे पृथ्वी जदि तुम कहूच सर्वं खलुइदं ब्रह्म ताले ए पृथ्वी तो ब्रह्मकर परिप्रकाश ताकू छाड़देवार कौन कारण से कहते नाई नाई ये पृथ्वी जेपरी हबार कथा सेमती हो पारानी कि आपको भी करा जाई परिबो नाही तेणु आपको छाड़िकी मोक्ष वा मुक्ति निर्वाण लाभ करने छाड़ अन्य उपाय नहीं आमे देखिले प्रथम करी श्री अरविंद ये अवतार पुरुष से कहले जे पृथ्वी को परित्याग करिवार प्रश्न उठुना कहीं ना पृथ्वी होची साधनार क्षेत्र यही होची हमर साधनार पीठ इठी आमे साधना करिबा तपस्या करिबा स्वर्ग लोकरे किंबा किन्नर लोकरे गंधर्व लोकरे यक्ष लोकरे कौन से साधना हुए नाही आपण माने जो माने पुराण पढ़ी ए घटनाक्रम सहित परिचित अच्छा समस्ते जानती जे जेतेबेले कौन से देवता किसी त्रुटि करे बा को गंधर्व किन्नरटीए तार कार्यक्रम जदि किसी भूल त्रुटि करे से अभिशप्त हुए आसे कौटी कि से आसे पृथ्वी को आसे तपस्या करे साधना करे इठी से शापमुक्त हुए तापर से स्वर्ग को जाए तेणु तपस्यार क्षेत्र स्वर्ग नुहे तपस्यार क्षेत्र होची एई पृथ्वी तेणु अतिमानस सत्ता देवता मानक मध्य नाही माँ तो आगु भी अन्य बहुत आलोचना है संपर्क में ना जितेबाला देवता माने भी अतिमानस शक्ति तार दीप्ति बा तार आलोक को लाभ करने को चाहिए तांको पृथ्वी को आसवाक पड़ो मनीष रूप से आसवाक पड़ो मनीष भाव में साधना करने पड़ो मनीष भाव में पृथ्वी साधना न करी यही प्रकार सिद्धि से माने लाभ कर न पारती श्री अरविंदर आउ गोटे कथा मु भावे जे आमर आनंद रामायण बोली गोटे रामायण अच्छी जो रामायण रे विभीषण कहते रामचंद्र को शेष भागरे जे प्रभु आपण तो अयोध्या परित्याग करके आसी आउ अयोध्या को कहीं प्रत्यावर्तन करेंगे बरंग आपण यही लंकार राज पदर अभिषेक्त हूँ आम मैंने आपण मानकर सेवक आपण एठी रुहतु सेठी रामचंद्र कहते यहाँ ठीक कथा नुहे विभीषण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी जननी जन्मभूमि स्वर्ग ठार मध्य आहुरी गरियान आहुरी गरियसी तेणु एठी जेते प्राचुर्य थाउ जेते प्रकार सुजोग सुविधा ए राज्य पदर थाउ एठी मोर रहिबार प्रश्न उठुनी ये गोटे पद सब गोटे अनिरणित हुए जितेबाला श्री अरविंद कहते ए मातृभूमि कौन ए भूमिखंडटे नुहे ये गोटे बाचिक अलंकार नुहे ये होचंती माँ तेणु मार शरीर होचे माटी जन्मभूमि को एते बेसी प्राधान्य दबा आम लक्ष्य कले एत वर्ष पर श्री अरविंदर वक्तव्य जोठी भारतर आत्मा दुर्गा को भवानी को से आह्वान करुछंती एवं से होचंती गोटे जातिर पश्चात जो भली गोटे शक्ति गोटे डिवाइन पावर बा गोटे दिव्य शक्ति निहित रही थांती एवं तांकरी प्रभाव रे से जाति तार धर्म तार संस्कार तार संस्कृति ये सब अवबोध को नहीं से विकसित होता है तेणु भारतवर्षर पृष्ठभाग रही से भारत माता माँ दुर्गा बा भवानी को श्री अरविंद स्वीकार कले तेणु आम भितर जो गोटे धारणा गोटे अवबोध थिला मातृभूमि को नहीं यहाँ आउ से धारणा को से पूरापूरी आम भितर बदलई देले जे ये माटी को जोटा को देखुच माटी पत्थर गोड़ी नदी बेली तुमको मन हो समुद्र ये पहाड़ ता नुहे ये हूँ मार एक स्थूल अभिव्यक्ति तेणु ये अवतारत्व जन्मभूमि को प्राधान्य दबा ए माटी को प्राधान्य दबार कथा आम एथरे देखिले तापर से कहले जे पृथ्वी को छाड़ीदेले आमर कौन सी प्रकार मुख्य मुक्तिर अभिलाष नहीं पृथ्वी को परित्याग करिवार नाही से हमको प्रथम शिक्षा देले जे पृथ्वी को आमर छाड़ीबार नाही तेणु ए जगार
से कहते जे हाँ ये पृथ्वी जेभली भाव में हवा कथा सेटा हो पारनी एइथिपई जे ईश्वरंकर पूर्ण प्रकाश एठी घटी नाही किंतु पृथ्वी सृष्टिर उद्देश्य को श्री अरविंद प्रथम करी प्रतिपादन कले जे एहा भगवानंकर आलोक को शक्ति को तांकर सत्य को एवं तांकर सौंदर्य को पूर्ण भाव में जहाँ को आम सत्य शिव सुंदर बोली कही आसुचु किंतु ठीक रे बुझी पारि ना ताको प्रकाश करवा ये प्रतिष्ठा करवा केवल प्रकाश नुहे इठी ताहा प्रतिष्ठित हम जमीती अनेक कथा पृथ्वी प्रतिष्ठित अच्छी से भाई ईश्वरंकर शक्ति सौंदर्य सत्य मध्य प्रतिष्ठित हम तेणु ये जो प्रतिष्ठार कथा से कहते ताहा किपरि संभव हम से अतिमानस शक्ति द्वारा जहाँ श्री अरविंदर सिद्धि आम भल भाव जानीचे से विषय में आम बारंबार आलोचना भी करें जे दीर्घकाल तपस्यार सिद्धि स्वरूप अतिमानस ये पृथ्वी को अवतरण कर जहाँफल से कहते ये शक्ति बल रूपांतर संभव आमको से कौन शिक्षा देते आमको नूतन एक योग पद्धति देले सेठी हूँ पूर्णांग योग बा रूपांतर योग ये योगरे कौन वैशिष्ट्य जो थे कि मनीषर मन प्राण एवं शरीरर विवर्तन घटिब तार रूपांतर घटिब एवं से नूतन भाव में निजक अभिव्यक्त कर जिनसटा विषय तो आम कहीं जान नथिले ना आम के भावी नथिले जे शरीर मन प्राण आम भितर एमती स्तर पर स्तर सब रही एवं यही सब स्तर रूपांतरीकरण आवश्यकता रही आमको तो जना नथिला तेणु श्री अरविंदर चैत्य बोली जो कथाटी कहले जो चैत्य सप्ताह कथा कहते जे यह हूँ श्री अरविंदर आमे एपर्यंत आत्मा परमात्मा कहले से दुईटी पक्षी द्वा सुपन्ना सजुजा कहीकि दुईटी पक्षी बसचंती गोटे आत्मा गोटे परमात्मा आमे से उपनिषदिक चिंता एवं विचारधारा को अनुसरण करी से ही बुझीलु आमे चैत्य कौन जानी नथिलु किंतु आहार सूचना जे आम प्राचीन ऋषि मैंने जानी नथिले ता नुहे जानी किछि आभास माने पाइथिले कारण से कहते जे हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य पिहित मुखम हिरण्मय पात्र द्वारा सत्य मुख अवरुद्ध ही रही किंतु ता भीतर सत्य निहित रही आर सूचना से माने पाइथिले किंतु प्रकृत रे व्यक्ति जीवन रे बा समष्टि जीवन रे बा संसार रे जगत रे ताको प्रतिष्ठा करिवार कथा से माने मध्य कल्पना करि पारि नथिले किछिटा आभास किछिटा सूचना तो निश्चित भाव रही तेणु श्री अरविंदर तेणु से कहले जे आमर ये जो रूपांतर योग यह द्वारा आमर मन प्राण शरीर को आमे रूपांतरित करि पारिबा रूपांतर साधना सहित गोटे अवचेतन कथा आमको मन रखा पड़ो अवचेतन हूँ चेतन अवचेतन निश्चेतन ए संपर्क में आम अल्प बहुत जानीचे बा से विषय में आलोचना कर लेटर्स एंड योग विषय श्री अरविंद तो तार विस्तृत भाव में तार वर्णना करमर एजावत धारणा थिला जे मनीषर जो अवचेतन से गोटे अंधारी गहर तार शेष नहीं ता भितर जुगावधि आमर अभिज्ञता आमर उपलब्धि आमर अनुभूति सब तारी भितर रही पुंजीभूत रही केवल मोर नुहे समग्र मानव समाजर दुख शोक जंत्रणा तार निपीड़न तार जेते प्रकार भयंकर दिगमाना मध्य सब मोरी अवचेतन भितर रही किंतु अवचेतन परिवर्तनशील नुहे ताकू परिवर्तन करी हबनी एभली गोटे धारणा थिला जो थरा में भाबुथिले जे जीन वंशगत जीन निश्चित भाव में उत्तराधिकारी निकट में प्रकाश पाइब ये कि असुविधा कथा जे तार केही परिवर्तन करि परिबे नाही ए धारणा आम भितर दृढ़ थिला श्री अरविंद कहले करा जाई पारिबो किंतु योग बल रे केवल योग द्वारा ही मनीषर ये जो जीन टाकू कहते जे तार वंशानुगत भाव में ता भीतर रही निश्चित प्रकटित हम सेमती कथा नुहे तार परिवर्तन हो पार एवं अवचेतन स्तर परिष्कार परिच्छन्नता ये सब संभव हो पार ताधरे आलोक श्री अरविंद जो कहते अतिमानस शक्ति और आलोक जिते अतिमानसर आलोक आमर अवचेतनर अंधारी गुहा उपर प्रतिफलित हम बा आलोकित कर धीरे धीरे प्रकाशित हो ता भीतर कौन अच्छी से कथा आमको से आमको कहले जे योग बल यहाँ करा जाई परिबो किंतु ये अवचेतन संपर्क में मोर कहीं मन होची जे मु आउ एहा पूर्वर किछि से विषय के बेले पढ़ी ना कि आउ कहीं पढ़ी ना मु पढ़ी ना माने अर्थ नुहे जे आउ के पढ़ नथिबे किंतु से भली कथा नाही
तेणु पढ़े कौन यही अवचेतन परिवर्तन रूपांतर साधन ये सब श्री अरविंदर पूर्ण योग साधना द्वारा ही संभव हो बोली से आमको आश्वासन देते मार्गदर्शन कर बंधुगण गोटे कथा हूँ कौन कि गोटे थ्योरी कहीदेवा गोटे विषयटा को केवल कहीदेवा से कौन हम मु बहुत तत्व जानी बहुत तथ्य जानी किंतु ताकू किभली कार्यकारी करी मोर व्यक्तिगत जीवन में मोर समष्टिगत जीवन में ता तो मुझे जानी ना तेणु तथ्य तत्व भितर साधारण भारतीय मानस दीर्घ काल धरी तारि भितर घांटी चकटी हो तत्व को धरिक बंची तथ्य को धरी बंची नाना प्रकार जोग दर्शन को अध्ययन कर आलोचना कर विचार विश्लेषण कर किंतु से सबर ऊर्ध्व को उठी प्रकृत में मनुष्यर जीवन को दिव्यतार परिपूर्ण करवा ताकू दिव्य करवा ताकू ईश्वर सत्तार परिणत करवा सेटा मनुष्य केबे भी चिंता करि पारे नाही सेटा कौन समस्त पक्षे संभव होता कि तेणु मनुष्य भितर जो विवर्तनशील चैत्य सत्तार कथा कहले आम जी बुझीचे जे आम भितर जमती कहुई जे गोटे मनुष्य 84 लाख जन्म पर से मनुष्य जन्म पाए आमर जोटा तंत्र शास्त्र वर्णना कराई से मनुष्य जन्म पाइबार 16 वर्ष पर 16 जन्म पर से ईश्वर संपर्क में सचेतन हुए भावुंट केते दीर्घ यात्रा एपरिक मनीष पर दुषुवा आकृतिर जीव मैंने जे आदौ मनीष नुहति एथरे सन्देह रहा कौन आवश्यकता नहीं मनीष से दुषुची मनीष पर किंतु हुए तो सी तार विवर्तनगत धारारे प्रथम पर्याय कि द्वितीय पर्याय रही से जाने से सचेतन है किंतु शरीरगत आकृति दृष्टि से मनीष सहित सामान देखा जाउछि तेणु ये कहते चैत्य सत्ता हूँ आम भितर एक विवर्तित सत्ता एक विवर्तित शक्ति को धारण कर रही सत्ता जे जन्म जन्मांतर धरी ताहा विकसित होउछि तेणु एमितिर आम मनीष सामान आमर आत्मा सामान ए सब ठीक किंतु आमर चैत्य सामान नुहे केमिति चैत्य समान हम किए केते शह वर्षर साधना करी जदि यही पृथ्वी रे एबे मनुष्य रूप से उपस्थित अच्छी ता चैत्य केते विकसित मु हुए तो यही केतोटी जन्म पार के आसी मो चैत्य मो भितर अच्छी कि से विकसित नुहे तेणु विकसित एक सत्ता हूँ चैत्य सत्ता जहाँ मनुष्य भितर निहित होइकी रहिचंती किंतु आमे तांको विषय सचेतन नथिलु किंतु कथाटी हैला ये जो जड़ मानक प्रति आमर जो उदासीनता आमर आध्यात्मिक ज्ञान भारतवर्षर सर्वोच्च शिखर रे रही सर्वोत्तम आध्यात्मिक ज्ञान भारतीय माने लाभ करिसंती किंतु दीर्घ काल धरी निजर साधना एवं तपस्या जनित बा शिक्षा जनित से माने जड़ को परिहार करिसंती पाश्चात्य देश रे से माने जड़ को देइचंती प्राधान्य आध्यात्मिकता को से प्राधान्य दे ना तेणु से माने दैहिक स्तर रे जागतिक स्तर रे बहुत विकास करिसंती सत किंतु आध्यात्मिक स्तर रे आत्मिक स्तर रे से विकास तांको पक्षरे संभव हेनी किंतु भारतवर्ष रे श्री अरविंद कहले जे आध्यात्मिकतार जड़ को जो परिहार करा जायछि ता नुहे कहीं जड़ ही हूँ मूल उत्स ता भितर आमर आत्मा निहित एवं निवर्तित होइकी रहिछि एवं आत्मार विकास तार भितर संगठित हो जाउछि जड़रू प्राण प्राणरू मन एवं मन मध्य मनातीत अनेक अनेक स्तर रही जहाँ एपर्यंत प्रकाशित होना कि प्रतिष्ठित हो पारि नाही आमे कौन एक कथा बुझीलु आमे तो बुझी देइथिलु जे हाँ सब पृथ्वी रे सृष्टि होगला जल होगला वायु होगला आलोक होगला जंतु तापरे खंजी दे गलु या पर आइला से तापर से आसला प्रभृति आमर धारणा केते भूल थिला आध्यात्मिकता दृष्टि स्पष्ट भाव में श्री अरविंद कहले जे जड़ भितर ही प्राण निहित अच्छी एवं प्राण भितर मन निहित अच्छी मन भितर निहित अच्छी मनातीत अनेक अनेक पर्याय एवं सही मनातीत अनेक पर्याय पर जो चैत्यर कथा में कहूचे ये अविकसित भाव में रही किंतु ता भितर तार संभावना संपूर्ण भाव में निहित होकर रही तेणु जोगी महाऋषि श्री अरविंद पृथ्वीर भविष्य संपर्क में मनुष्यर भविष्य संपर्क में तांकर जो जोगानुभूत वास्तवता को सावित्री महाकाव्यर वर्णना करछंती आमे जानू अश्वपति राजा अश्वपतिंकर जहाँ सब अभिज्ञता घटुची आध्यात्मिक अभिज्ञता से अभिज्ञता विश्व देवी विश्ववारा सम्मुखें से उपस्थित होती से प्रसंग क्रम से अति मानवर स्वरूप को सेठी से दर्शन करुछंती से देखुचंती जे महाकाल शिव प्रचंड तांडव नृत्य रत अछंती
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦବିକ୍ଷେପରେ ଅଗ୍ନିହୁଳାମାନ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିହୁଳାମାନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରି ପକାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତର ଦେଇ ଏଇ ଆକାଶର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତୀ ତାରକା ତାରି ପଥ ଦେଇକି ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ମାନବମାନେ। ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ନା ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ନିୟତି ମଣିଷକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କରାୟତ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁ ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନଥିଲେ ହେବନି, ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ନିୟତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟର ଦାସ ହେବନି, ନିୟତିର କାଠପୁତଳିକା ହେଇକି ସେ ଯେମିତି ନଚେଇବ ସେମିତି ସେ ନାଚିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ସୂଚନା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ପରି ନିୟତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକିତ ସନ୍ତାନମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ସତ୍ତାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସୂଚନା ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ରହିଛି। କୌଣସି ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ବା କୌଣସି ଅବତାରୀ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର କଥା ବା ଏଭଳି ଗୋଟେ ନୂତନ ମଣିଷ ଜାତିର କଥା ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ରସାୟନିତ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ପରିଶୀଳିତ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ସେ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିବେ, ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମତ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ସେଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଆମର ବେଳେବେଳେ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସାଧନା ଆଲୋକର କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାହା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲାବେଳେ ବି ଏତେ ଅସତ୍ୟ, ଏତେ ଅନ୍ଧକାର, ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳର କଥା ଆମେ ସ୍ମରଣ ରଖିଛୁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର 12 years with ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକରେ ନିରୋଧ ବରଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମତଃ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ମଣିଷ, ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଏତେ ନିଷ୍ପୃହ ଭାବରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟାକର୍ମଠାରୁ ସେ ନିଜକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇ ଯୋଗୀ ସୁଲଭ ଅନାସକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆମେ ତାହା ହିଁ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମ ମନ ଭିତରେ ବି ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ପଚାରି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଉଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆଲୋକ ଚେତନାର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ତ ସେଇଭଳି ଅନ୍ଧକାର, ସେଇଭଳି ହିଂସା, ସେଇଭଳି କରାଳତା ଏସବୁ ତ ରହିଛି ନା, ସେ ତ ଦୂର ହେଇଯିବା କଥା। ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁନା ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଯୁଗାବଧି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ରହି ଆସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ କହିଲୁ ଯେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବାର ମୁଁ ତ ଆଦୌ ବି ହତୋତ୍ସାହିତ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଅନ୍ଧକାରର ପୃଷ୍ଠପଟରେ ନୂତନ ଜଗତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ନୂତନ ଜଗତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଖରେ କେହି ତାର ବାଧକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାହା ଏକ ଅପ୍ରତିହତ ଶକ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନର। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଇମାରତ ମାନ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଚେତନା, ଯେଉଁ ବିଚାର, ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଏକଦା ଏ ବିଶ୍ୱ ମାନସକୁ ନିଜର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରେ, ପୃଥିବୀର ଚେତନାର, ମଣିଷ ମନସ୍ତରର, ସେ ଉଚ୍ଚ ମନସ୍ତରରେ ତାହା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ଏଇ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଭରସାଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା କି ନ କରିପାରିବା ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା, ଆମର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭରସା ରଖିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆଜି ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦିଆନ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କର ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ। ନା, ହେବ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇନି କି ତୁମେ ବି ମୋତେ ଦେଇନ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରୂପରେ, ତାଙ୍କରି ତନୁରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରୁ ବି କେହି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଭାବରେ
आत्मस्थ हो ध्यानस्थ हो वर्तमान मनीष को एवं मनीषर सचराचर पृथ्वी गतिविधि एवं राज्य राज्य भितर घटी उठुवा घटनावली को लक्ष्य करे ताहले से निश्चित भाव में अवगत हो जे यह पछरे कौन सी शक्ति काम करुछि ए निजे निजे आपे आपे घटी जाऊनी ये कौन सी जिनस आपे आपे घटी जाऊना तेणु माँ आमको स्पष्ट भाव में कही जे ये जो सत्य लाभ करने जे पृथ्वी को छाड़बार कौन से प्रश्न ना प्रथम कथा ये पृथ्वी हूँ आम साधनार भूमि यही हूँ आम तपस्यार क्षेत्र श्री अरविंद को जो दिन माँ देखी शेष कथा टी यही कही रखी जे जमती सावित्री कहले मुझे मुहरे देखिली शाश्वतर से स्मित हास्य से माँ वर्णन अच्छी जो दिन माँ श्री अरविंद को देखिले आपण मैंने जो मैंने आश्रम जानी श्री अरविंद कौटी आते एवं से पहाचर तले माँ देखुं प्रथम दर्शन को ताकू लिपिबद्ध से करुँचे जे शत शत जीव जदि गाढ़तम अज्ञानता मध्य डूबी रही था से किछि जाए से ना काली मु जहाँ को देखिली से पृथ्वी पृष्ठ विद्यमान तांकर उपस्थिति ही यथेष्ट प्रमाण दिए जे एपरी एक दिन आसब जो अंधकार आलोक रूपांतरित हम ये कथा से लिखिं जो श्री अरविंद को देखिले कारण आम दृष्टि तो किसी देखिपार सामर्थ्य हासिल करना एपर्यंत किंतु माँ दृष्टि आम देखिले श्री अरविंद भितर से दिव्योत्तर प्रकाश को से देखुं कौन जहाँ को काली मुझे देखिली सी जे पृथ्वी में बर्तमान विद्यमान अच्छा से शत शत जीव किए गाढ़ अंधकार भितर अच्छी से विव्रत हबार कौन से कारण ना यह एक निर्भर प्रतिश्रुति जे स्वयं भगवान यही पृथ्वी अवतार ग्रहण करके उपस्थित अच्छा से आमको नेतृत्व दौरान से आमको परिचालित करमर जोग व्यवस्था आम शिक्षा व्यवस्था आम चिंतार आम चेतनार आमर विचार आमर भावना यही जो सकल परिवर्तन शुभारंभ घटी ताहा निश्चित भाव में श्री अरविंदर प्रतिश्रुतिर एक फल तेबे कहीं जड़े बोधे पचार माँ को माँ जो श्री अरविंदर पृथ्वी रे उपस्थिति संपर्क में कौन कहुपे से कहते भौतिक स्तर में आविर्भाव परिणति बा परिणाम पृथ्वी पर चिरंतन भाव में रहिबो मानसिक स्तर में विश्व इतिहास रे यही आविर्भाव चिरंतन भाव में स्मरण ही रहिबो चैत्य स्तर में यह आविर्भाव पृथ्वी पृष्ठ में चिरकाल निमित्त पुनरावृत होउथिबो आध्यात्मिक स्तर में यह पृथ्वी पृष्ठ में शाश्वतर आविर्भाव ये माँ आमको संपूर्ण भाव में निश्चिंत करदेले जे शाश्वत आविर्भूत हो सारी पृथ्वी रे एवं तांकर सिद्धि तांकर साधनार सिद्धि फल आज आमे माने से पथरे जावाक चाहूबा से विश्वास रखुवा आमर चिंता एवं चेतना को सही रूप से परिच्छन्न कर चलता बा रूपांतर पाई आमे तांकर साहाय्य प्रार्थना कर चलता माँ आशीर्वाद बिना तो किसी भी संभव नुहे तांकर करुणा पाई आमर अहरह प्रार्थना चली तेणु यही गोटे अग्रग दल गोटे अग्रगामी मनीष चेतना भितर यही रूपांतर निश्चित भाव में संभव हम एवं श्री अरविंद भविष्यतर अवतार किंतु आम भितर गोटे मानसिकता रही था जहाँ बहु जुग धरी प्रतिष्ठित हो जाइए से अवतार पर आम सहजरे स्वीकार करना किंतु कहार स्वीकार अस्वीकार आमर किसी जायस नहीं कारण आम समस्ते जो मैंने संपूर्ण भाव में उन्मिलित होकर रहीचे बा माँ उपर भरोसा कर रखीचे से दिव्यवाणी आम जीवन में आमको नेतृत्व दो आमको परिचालित करूँ एवं माँ आमको सदा सर्वदा करुणा करूँ आमे तांकरी शरणापन्न से तांकरी करुणारे तांकरी कृपारे तांकर दया आमर जीवन को परिचालित करूँ। धन्यवाद।